कि चांद की धरती कैसी होगी, कैसे लोग बसते होंगे, कैसा दृश्य होगा। उन पहेलियों का वैज्ञानिक उत्तर ढूंढने का रास्ता भी चंद्रयान ने ही हमवार किया। और भले ही अमेरिका ने, आज जैसे सुबह कहा जा रहा था, शशि थरूर जी ने और अन्य कुछ हमारे मित्रों ने पूरी क्रोनोलॉजी बताई कि सबसे पहले 1969 में चांद की धरती पर मानव उतारा था नील आर्मस्ट्रांग, जो वहां कुछ टहले भी थे। उन्होंने वहां एक पहुंच करके वक्तव्य दिया जो बड़ा प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने कहा, 1 स्मॉल स्टेप फॉर मैन, जाइंट स्टेप फॉर मैनकाइंड। लेकिन हम सब के लिए, हम चाहे इस तरफ बैठे हैं कि उस तरफ, गर्व का विषय ये है कि नील आर्मस्ट्रांग वहां स्वयं होकर के आए, टहलपोशी करके भी आए, परंतु उनको वहां पर पानी नहीं दिखाई दिया। वो हमारा चंद्रयान था जो जाकर के वहां पर जल होने का प्रमाण लेकर आया। मैं बिल्कुल आगे चलेंगे, अभी मैं बताऊंगा। मैं कुछ एक विषय उठाए गए हैं कुछ एक मित्रों द्वारा, उसका मैं बिंदुवार उत्तर देने का प्रयास करूंगा, परंतु चूंकि ये खुशमय माहौल है सेलिब्रेशन का, इसलिए पहले 5 मिनट में दूसरी एक बात रखूं। चंद्रयान की इस लगभग 2.5 महीने की यात्रा में, कि 14 जुलाई को गया था, बड़े महत्वपूर्ण पड़ाव रहे हैं। कुछ एक ऐसे जहां थोड़ी बहुत चिंता भी होती थी, एंजाइटी भी होती थी, एप्रीहेंशन भी होती थी, जो संवेदनशील भी थे, और ये अटकलें भी लगाई जाती थी कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। उसमें सबसे पहला, जबकि वो धरती के ऑर्बिट से निकल करके उसे चंद्रमा के ऑर्बिट में जाना था, तो लगभग 20 बार उसने इस प्रकार से परिक्रमा की भारत धरती की। और उसके बाद, क्योंकि हमारी, जैसे कहा गया कि केवल 600 करोड़ की ये मिशन था, जबकि रूस का मिशन उसी समय जो चल रहा था वो 12,000 करोड़ का, यानी कई गुना ज्यादा। लेकिन हमारी जो बौद्धिक क्षमता थी, हमारे सेरिब्रल रिसोर्सेज वर मच बिगर इन प्रोपोर्शन। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के माध्यम से हमने 120 बार परिक्रमा की, जैसे गाड़ी आप न्यूट्रल पर लगाते हैं और पेट्रोल बचाते हैं। वो एक संवेदनशील क्षण था जब उसे निकल करके दूसरे ऑर्बिट में जाना था। वैसे होता है कि गाड़ी चलते चलते आप ट्रैक बदलते हैं और दूसरी ट्रैक पर जाते हुए रास्ते में कोई मिसहैप ना हो जाए। तो वो पहला क्षण था संवेदनशील, वो उसने सफलतापूर्वक हासिल किया, कामयाबी से उसको निभाया, और वो चंद्रमा के ऑर्बिट पे चला गया, जहां उसने 20 सर्कल लगाए, ऐसे बाहर से होते 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 धीरे 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 अंदर आके, और फिर आखिरी क्षण थे जब आप सबने टेलीविजन पर देखा, जब केवल 400-600 किलोमीटर रह जाते हैं तो यकदम उसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से घट करके 150 किलोमीटर हो जाती है, और 4 इंजन में से 2 इंजन बंद हो जाते हैं। और फिर उससे भी अधिक जो एक रोचक क्षण भी होते हैं और थोड़े से एंग्जाइटी वाले भी, जब वो लगभग 100-150 मीटर धरती के सतह के करीब पहुंचता है, उस समय उसका कम्युनिकेशन हमारे साथ बंद हो जाता है। और फिर ये इम्तहान है कि हमने विक्रम को किस कदर प्रशिक्षित किया था। जैसे आप एक सैनिक तैयार करके भेजते हैं फ्रंट पर, तो मौके पर उसने कब गोली चलानी है ये उसके हाथ में है। तो वो हमारी परख थी कि वो वहां लैंड कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि जब बिल्कुल नजदीक पहुंच जाता है तो फिर वो थोड़ा सा उसको वक्त मिलता है 2-4 किलोमीटर के रेडियस में ये तय करने का कि मैं कहां पहुंचूं, और उसके लिए टाइमलाइन होती है। क्योंकि अगर आप गाड़ी स्वयं ड्राइव कर रहे हैं तो आप रोक सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाएगा। वो टाइमलाइन हट जाए तो वो फिर लैंडिंग मुलतवी हो जाती है। लेकिन वो क्षण भी बड़ा स्मूथली निभाया गया। ये मैं घटनाक्रम इसलिए सुना रहा था
कि मुझे हर्ष है इस सदन के साथ ये बात साझा करते हुए, और शायद इंतजार है इस बात का कि क्या विक्रम और प्रज्ञान अपनी नींद से जाग जाएंगे, और इस वक्त सारा प्रयास उस ओर है। तो मैं चाहूंगा कि विवाद से ऊपर उठ करके हम चंद्रयान की दूसरे मरहले की यात्रा के लिए प्रार्थना भी करें और प्रयास भी करें। अब से कुछ ही समय के बाद ज्यों-ज्यों यहां शाम ढलने लगेगी, सायकाल के साए लंबे होने लगेंगे, हम सब रात की चादर ओढ़ करके सोने की तैयारी करेंगे, तो धीरे धीरे चांद पर सूर्योदय होगा। क्योंकि वहां 14 दिन का, हमारे 14 दिन, उनका एक दिन, 150 डिग्री टेम्परेचर जाता है, और दिन को +100, यानी मैक्सिमम और मिनिमम में इतना अधिक फर्क है। हमने सोलर बैटरीज की व्यवस्था कर रखी है, हमारी बैटरीज भरी हुई हैं, और पैनल्स को इस दिशा में रखा है कि जो ही सूर्योदय हो वो फिर से सूरज की रोशनी को कैच करना शुरू कर दे। अब केवल डिग्री से ऊपर टेम्परेचर आ पाएगा तो तभी वो सर्किट काम करेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड में वो सर्किट काम नहीं करेगा, भले ही बैटरी भरी हुई है। तो अब हम सारे टीम इसरो के सारे साथी और हम सब इस मिशन से जुड़े हुए एक एक क्षण घड़ी देख करके इस प्रतीक्षा में है कि जैसे सूर्योदय हो तो सर्किट का टेम्परेचर थोड़ा बढ़े, वहां पर बढ़ना शुरू हो, वो एक्टिवेट हो, और जैसे ही वो एक्टिवेट होगा तो वेकअप कॉल जाएगी, विक्रम आंखें मलते मलते जाग उठेगा और प्रज्ञान भी उठ खड़ा होगा 14 दिन की नींद के बाद, और फिर वो अद्भुत बात होगी जो आज तक कभी ना हुई। चांद के साउथ पोल पर जाकर के विक्रम और प्रज्ञान का नींद में सोना और नींद से जाग करके फिर एक्टिव होना, पहली बार दुनिया में। और मुझे विश्वास भी है, और जिस प्रकार लगन और निष्ठा और मेहनत के साथ हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात काम किया है कि हम इसमें सफल रहेंगे। और कल जब सारे देश में महिला संरक्षण बिल के पास होने का जश्न मनाया जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन किया जाएगा, हमारे पास शायद वो भी अवसर हो कि हम इस बात का भी जश्न मनाएं कि हिंदुस्तान वो पहला मुल्क है जिसने साउथ पोल पर विक्रम और प्रज्ञान को भेजा, उनको नींद में सोने दिया, और जब वो जगे तो उनको फिर से काम पर लगा दिया। ये वेकअप और पोस्ट वेकअप एक्टिविटी अगर हमारी सफल हो जाती है, कुछ ही घंटों के भीतर इसका पता चल जाएगा, तो हम दुनिया के पहले देश होंगे। उसके बाद हम, चूंकि रोवर हमारा थोड़ा चलना शुरू कर गया है, कोई 100 मीटर उसने अपनी पोजीशन बदली है, तो मुमकिन है हम उसे थोड़ा और स्थान परिवर्तन करने में सफल रहें, और फिर भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोग रहेंगे। उसमें तकनीकी तौर पर कुछ सॉइल एक्सपेरिमेंट्स रहती हैं, जैसे सुबह हमारे कुछ एक साथियों ने यहाँ बताया कि सल्फर को लेकर के, एलिमेंट्स को लेकर के, मिनरल्स को लेकर के। दूसरी श्रेणी के प्रयोग रहते हैं एनवायरमेंटल को, और तीसरी श्रेणी के रहते हैं हमारे सिस्मिक एक्टिविटीज को, कि जैसे यहां पर भूकंप आते हैं, झटके लगते हैं भूचाल के, ऐसी थरथराहट वहां भी होती रहती है। तो अगर ये होता है तो हमारा सेकेंड फेज ऑफ चंद्रयान 3 is about to take off in the next few hours, and the moment of anxiety now is that we are waiting for the wake-up call to get activated and Vikram and Pragyan to respond to that alarm. Once they do, then the communication from the earth will begin, and we will be the first in the world to have accomplished this. अब इसके बाद कि मैं अगली बातें करूं, कुछ एक बिंदु जो उठाए गए, जस्ट टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। माननीय रक्षा मंत्री जी ने तो बड़े विस्तार में हमारे प्राचीन परंपरा को किस तरह से आधुनिकता के साथ जोड़ करके
एक मिश्रण भरी संस्कृति स्थापित करने का प्रयास हुआ इस सरकार में, उसका एक आपके सामने चित्र रखा। लेकिन कुछ कुछ बातें उठाई गई, लेकिन रोचक बात यह है कि हमारे उस तरह से भी कुछ एक मित्रों की जो आलोचना थी, उस आलोचना में ही उत्तर था, तो मुझे कोई उत्तर देने में कठिनाई नहीं। उदाहरण के तौर पर हमारे मित्र शशि थरूर जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ वैज्ञानिक बहुत प्रतिभाशाली थे, और वो उल्लेख कर रहे थे उस चित्र का जिसमें सारा भाई बाईसाइकिल पर अपना सामान लेकर के जा रहे थे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ऐसा कहना मुनासिब नहीं कि सब कुछ 2014 के बाद ही हुआ, तब भी हो रहा था। लेकिन जाने अनजाने में वो ये भी स्वीकार कर बैठे कि हालत ऐसी थी कि साइकिल पर सामान ले जाना पड़ता था, और वो 2014 का पहले का दृश्य था। फिफ्टी का था, वही कह रहा हूं। फिर 50 में कौन थी सरकार और कौन था प्रधानमंत्री? तो यही जवाब आ गया, यही जवाब है, क्योंकि साधनों का अभाव, दिस वॉज दी। वो कैसे पूरा हुआ भी आपको बताएंगे, अभी तो रात लंबी है, अभी विक्रम के जागने तक हमने भी नहीं सोना है, तो बात लंबी चलेगी। बिकॉज दे वर डिवाइड ऑफ रिसोर्सेज, they didn't have resources. Even in those days, even 1950, you had carriages, you had truckloads. The honorable members will bear me out. The best means of carrying loads was not the bicycle. That is the difference between then and now. The answer lies in the question itself. दूसरा, नहीं अभी I'm not yielding. बाद में सर, बाद में करते हैं, बाद में करेंगे सर। अधीर जी आप इनके बाद ही बोलेंगे। प्लीज यू लेट हिम कंटिन्यू। कोई बात नहीं। दूसरा उन्होंने वेरी राइटली enumerated the names of some of the women scientists, and to the amusement of the House, very pointed out in his own way कि यहाँ आरक्षण की आवश्यकता हो सकती है, वहां नहीं है, क्योंकि वहां पहले से ही बहुत सारे वुमेन साइंटिस्ट हैं। The again answer lies in the question. The women scientists that he has named are from the generation of scientists which has happened now, not in those days which he was talking about Nehruvian. Today, in fact, हमारा चंद्रयान की भी सेकंड प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है, असिस्टेंट प्रोजेक्टर, इज अ लेडी कॉल्ड कल्पना। वो तो आ नहीं पाई, लेकिन वीरा मिथुवेल, हु वाज नेम्ड स्पीकर आफ्टर स्पीकर, was sitting over here in the gallery. I introduced him in the Rajya Sabha. No. That was just to make the house. No, I can't say that he was there in the gallery. No, that is, ठीक है, वो कोई बात नहीं. The idea was that the members should also have a glimpse of him. I'm not referring him, not quoting him. He is now not there because he had to take a flight for Bangalore. The Aditya अलग तरह से उनको बुला ले, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, तो सारे मेंबर मिल लेंगे, उनको अलग से बुला ले। हाँ, करेंगे। अभी तो he has left, but we'll call him again. We'll again host him with the members. The Aditya mission is being headed again by a project director called Nijar Shahji. They are all women scientists who have come to the surface, come to the center stage only in the last 10 years. अब अच्छा, चलिए उस पर आएंगे उस पर आते हैं. Then it was no, I'll give you figures. I am giving you. See,
when we are debating, when no, I don't get disturbed. I'm the last person to get disturbed or distracted. But one thing, when we are discussing science, let us discuss on the basis of facts, figures, and statistics. Yes. No. You are translating figures into politics. I'm simply giving you figures. No, I'm letting, just wait. Let more figures come out. You said the ISRO budget and the space budget is on decline. Now, honorable member will be kind enough to take note of this figure so that she can verify later on. The Department of Space budget in 2013-14 was 5,168 crore 96 lakh. Please, I'll repeat for your convenience, ma'am. 5168.96 crore. The budget in the current financial year is 12,543 crore 91 lakh, an increase of 142.68%. I repeat the figure. So what? If I don't say that, then also so what? No. 142% increase. So what? Come, sit down. Mantri ji, please. Now, Honorable Minister, please address you ask the chair. for figures. First you ask for figures. First you ask for figures. Then you are replying figures with politics. Please बैठ जाइए. This is for your satisfaction, man. बैठ जाइए. I am requesting honorable member to Please address the chair. Yes. So it will be easier. So, Speaker sir, the total budget of all the science departments. Why you say that scientists? There are so many scientists in South. They talk only English. They talk only Tamil. They don't talk Hindi. Nobody is imposing Hindi on them. Why I am having a grievance is that ISRO is one of the best bouquets of the composite culture presented by India. You look at the founding Troy, we had Sarabhai, son of Gujarat, from where Honorable C.K. Patil comes. We had Satish Dhawan, Jammu and Kashmir. And then, immediate next generation, we had APJ Kalam from Rameshwaram, son of Tamil Nadu. So why are we demeaning this and trying to say he spoke Tamil, he spoke English, he didn't speak Hindi, why are you saying? Is it not amazing? The founding fathers, 60 years ago, one Punjabi, one Gujarati, one Tamilian. Absolutely. So thank you. No, I appreciate that. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah, Bhabha was there, not very, because later on he drifted to atomic energy. And now, since Madam Kani Modi has been very kind to compliment me, like a gentleman, I have to return the compliment. Very soon, we will have our next launching station nowhere else but in her constituency of Kurukshetra Patnam in Tamil Nadu. And I just solicit your cooperation. 90% of land acquisition has been done. 10% is left out. You can easily use your good offices to persuade the state government so that we can have a ceremony very soon, and you being the elected representative there would be our important guest. So this is the spirit with which we are working. And ISRO, somebody said in the morning, why Raksha Mantri ji spoke about scriptures. I have been telling all around wherever I go that ISRO is a work model which is worth emulating. Here is a team which never retires. A scientist in ISRO, sir, never retires. He never superannuates. He gives his life to the mission. Even if you see these pictures when you see of landings and other successful missions, you find all the former chairmen sitting side by side. They remain associated and they follow a cultural SOP which is not seen anywhere else, but which is worth emulating. Before and after every landing, they pay obeisance at Tirupati, and afterwards,
How do they celebrate success? You know, sir, they distribute a laddu. इससे सुंदर, इससे पवित्र प्रथा और जिसमें सामूहिक भारत की पूरी संस्कृति झलकती है। और इसलिए संस्कृति को आधुनिकता तक ले जाने की इस यात्रा को आगे बढ़ाने का कारवां हमारा इसरो है। तो इसमें क्या हर्ज है अगर हम संस्कृति को लेकर बात भी करते हैं। Then there was another observation made by Mr. Kanti Chidambaram, who said science and spirituality have a close relationship. But at the same time, the Raksha Mantri has sought to confuse that. By saying so, he created further confusion by not letting us know what he meant. As far as I know, Swami Vivekananda said, very simple terms, science begins where religion ends, religion begins where science ends. So I think let's go home, ponder on that, educate ourselves on that. Then he said, very sarcastically, because possibly he is also known to be an intellectual, he said, I'm not sure whether after 1,000 years this building will stand, this new building of Parliament House. Everybody of us heard? He's expressed doubt that this new building we have shifted in is unlike those monumental buildings built by the earlier generations and the temples. And he compared it with this building and said, who knows whether after 1,000 years this will stand. My humble request is that all of us, he and us, can wait for 3 more generations. Let the 5th generation Chidambaram come to this house elected and decide whether he is in this house or other house. Why should we be judgmental just to score a point? And because that creates a little bit of spice, we can use this. I can use this in plenty. If he is 2nd generation politician, let us wait for the 5th generation of the same family. Whether the 5th generation Chidambaram is there in this house or some other house. And that the history decide. What I am trying to say is, sir, let us raise the level of this discussion instead of trying to hit below the belt. This is called hitting below the belt. And I think I am quite competent of doing that. But I am avoiding from doing that. Then, just want to share an information. He also said that many people do not know where is ISRO. Exactly. That is true. And many people do not know ISRO because, and it is true that till a few years ago, whenever a launching happened, in a remote column of a remote newspaper, you will find one column, Sriharikota. Nobody could figure out where is Sriharikota. This change has happened only since 2020. Now, who was the Prime Minister, who is the government, I'm not going to say because that will create problems. No. 2020, the gates of Sriharikota were thrown open. Aditya launching was watched by 10,000 spectators. 10,000 spectators, you can verify. The pictures are there, videos are on the side watching the launching with their naked eye. The same place where earlier you had just 10 members of the team, all forbidden. Who did that? The earlier governments. The same government whose member is alleging this. The allegation is made by a member of the party which was responsible for that. Chandrayaan launching. Speaker, sir, during Chandrayaan launching, there were 1,000 media persons at the site of launching. Suddenly, within 10 minutes of launching, there was a tweet from one of the friends from the Congress party, because some of us are very active in tweet, so am I, so are they. He said, what is different? Why this halla gulla? And the media person confronted me. He said, see, your friend from the Congress party has written this tweet. What is new? Any response? I said, you tell me, when did you come here last? He said, I'm coming here for the first time. I said, this is new. Media was forbidden, everybody was forbidden. So that is the difference.
All the stakeholders have been brought together. A healthy synergy has been sought to be made between startups, between academia, between researchers, between industry. Because it's our confirmed belief, it's our considered view that if we have to grow further, if we have to live up to global parameters, if we have to discharge a global role, we have to live up to the global benchmarks, and we have to develop global strategies. Please, you do not forget the failures. No, you are. I'll come to that also. I thought you studied science streams better than me. Chandrayaan, now if I come to that, let me first, because professor is an honorable professor for all of us. Lot of misgivings. But sometimes the students... Lot of misgivings sometimes are students there grow up to relating become... Chandrayaan 2. Yes, sir. It is better you no, I'm clear sure. all those no, but, cobwebs. yes, I'll continue. Because it has been just repeatedly in said. half a minute I respond to the professor, and I'm sure the professor No, will be glad to... it is better you clear the cobwebs. Yes, sir, yes, sir. In this discussion today, many members said it is a failure. It is only one part which has exactly, failed, sir. whereas there are what number I'm of trying, other that things is which are success. what I'm trying to it say is still rotating for 3 years. What I'm trying to say is, एक मिनट, अरे भाई एक मिनट यार, अरे जी, अरे रमेश जी बात, अरे छोड़ो ना, ओहो, चल यार एकेडमिक बात, एक मिनट है, और रमेश जी, यार ठहरो ना, एकेडमिक की बात चल रही है, एकेडमिक चल रहा है, ठीक है, और आई एम ग्लैड प्रोफेसर, ओ भाई एक मिनट यार, बात तो करना, आई एम ग्लैड दैट प्रोफेसर, यार एक मिनट, अच्छा बात चल रहा है मालूम, I am glad that professor has put this query, and I am glad, and I am sure professor will take pride in seeing that his student is capable of giving a new thought, not teaching but a thought. So a professor should be happiest when he finds his student turning into a teacher. Sir, it was not a failure. Because, as the Honorable Speaker said, it is still working. On the last minute, that procedure which had to happen did not happen as it was calculated to the last moment. Otherwise, it would not be communicating. In fact, Chandrayaan 2 and 3 are talking to each other, saying good morning to each other every morning. And even now, when we are waiting for Vikram and Pragyan to wake up, if the circuit gets charged and we are waiting for the temperature to rise, we will not be surprised they receive a good morning or a hello from Chandrayaan 2. Second, even if you go by statistics, as I said in science, let's talk by statistics. Most of the other missions which landed on the moon were unsuccessful in the first attempt. America, more than 3 times. We have been unsuccessful, if at all, only once. Now, coming back to the... Yes, so I now settled why ISRO was not known then and known now. But the important point is that it has given us multiple outcomes. A, sir, huge investment of industry with the new policy having come in. B, a sense of belonging to the whole nation. Why the entire nation was glued to the TV screen? Because it was whole of government plus whole of nation. Every citizen of India felt as if it was his or her mission. Because this government had liberated it from that veil of secrecy. I don't know why we had to work in that confidentiality for all these years, where everything is being watched by Google. So it was not giving us any reward, but we were restraining ourselves from getting the benefit of the resources available. That has been undone. Then, rather, the same member said, why not give ISRO fellowships? Maybe when you, actually what happens is, sir, in the parliament also, when we make up our mind to score some political points, we sometimes tend to lose the factual points, because the orientation then becomes more politically directioned. If he had just referred to us or referred to some source,
he would have realized that not only the fellowships are being given, in fact, this government, and I was personally taking interest, I realized that most of our training institutes, the best one of them in Kerala, of course, no doubt, where Mr. Premnath's constituency, the Premchandji. So Trivandrum is one of the best institutes we have in space technology teaching. 100% placement. It's a batch of about 160. The selection is done through IIT JEE, the same form, but many people were not aware of it. So I thought we should try to expand. Only 3 years back, I thought we should start from Northeast and North. So we started one similar center in Northeast, in Agartala, in the premises of NIT Agartala. So same kind of department, same selection pattern through IIT JEE and same course. The other one from North, the northernmost territory, Central University of Jammu. So we have already, in fact, launched ourselves in expanding the range of academics as far as the teaching of space is concerned. Now, the other part is that what has happened now? Now, let me thought, I'm not discussing prime ministers. You are only discussing again and again. I'm not even naming anybody. But let us trust. We have to trust somebody. Can we trust the global parameters? Before 2014, in Space Department, in fact, even before 2019 or so, we had only 4 startups. 4. 1, 2, 3, 4. After we opened up in 2020, we have 150 startups. The world is watching, it can be verified. And the earlier ones like Skyroutes have become lucrative entrepreneurs. If you see the startup as a whole, we were only 350 to 400 till 2014. Now, in 9 years, we have gone up to 1,25,000 and more than 110 unicorns. It's not, nobody has said that the earlier governments didn't do anything. That's not the intention also. Even the Honorable Prime Minister has been reiterating that. Nobody has said that. I don't know why some of us sitting that side are very keen or feeling guilty to say, no, it happened only in our times. But the fact points out that if you see the Independence Day addresses of all the Prime Ministers, Nehru delivered 17 Independence Day addresses. Present Prime Minister has delivered 10 so far. The intent and the priority of the government in place is reflected in the Independence Day address. That is a declaration of the intent of the government of its future plans and priorities and flagship schemes. In the 2014 Independence Day address from Red Fort, Prime Minister's address refers to Swachhata, cleanliness, and addresses the problem of urinary tract infection and other diseases happening in young adolescent girls, and many of them suffering from avoidable agony because of the lack of toilets. Again, a scientific declaration. In 2015, Prime Minister's address in Independence Day says, Start Up India, Stand Up India. And the following year, there is a startup scheme. हाँ तो स्टार्टअप भारत कर दो, अच्छी बात है. Sir, I think we will accept it. The government should consider. Yes, sir, no problem. Then, see, Dada, this happens when you are thinking of how to make a political counter. The casualty is the fact. You understand very well what I mean by saying, and yet you want to deviate. But I am not that easily vulnerable to deviations. The next address of the Prime Minister says, Digital India, Digital Bharat. Okay. Again, a scientific declaration. The next address, 4th one, says e-governance. The subsequent address says deep sea mission. And two consecutive addresses of the Prime Minister from the Red Fort are referring to deep sea mission. We have 7,500 kilometer long coastal area, longest in the world,
beginning from Odisha up to Maharashtra, Gujarat, Kutch, nobody had ever looked at that. Well, okay, one of the longest, conceded. But nobody had looked at that. The Chandrayaan has been launched a few years back, and the huge wealth that lies underneath, metals, minerals, biodiversity, that is going to be discovered now. Then Gaganyaan finds mention in one of the Prime Minister addresses in the Independence Day. And when he said that India has decided to send a human being. नहीं, announcement इसका Independence Day address में हुआ है, check करें दादा. What I am trying to say is, I am not talking, see, I don't know why you want to make this debate Nehru versus somebody. You are obsessed with it, I am not, because I have the facts on my side. I am not, I am giving you dates. I am saying, Prime Minister, I am making a very holistic, a very academic statement. A Prime Minister's address from ramparts of Red Fort on Independence Day is considered to be a declaration of intent by the entire world, of the government in place, whichever the party. Now I am referring to 10 addresses from the highest forum and the theme they carried, which was primarily scientific. So that establishes the kind of priority that this government gives to science, the scientists, and the scientific endeavors. Now, two more things. Now coming back to the parameters. In startup, I was talking of startup ecosystem because Dada interrupted me. We are 1,25,000 startups, but at the same time, the world has today recognized Bharat as number 3 ecosystem in startup. Now, I am not saying this, Treasury not saying this, Prime Minister Modi not saying this, the world saying this. Now, what can I tell them? Don't say that we are number 3, because the Nehruvian followers will not like it. See, let us be logic. We are talking science. Even in discussing science, we are not logic. Then, Global Innovation Index, one of the most respectable universal index to measure a country's innovation capacity. We were position 81 in 2014. So in 65 years, we reached 81. I am not saying which government, which Prime Minister. Please, spare me of this. I am talking like a student of science. But the fact is that today we are 40. So what I am trying to say is that this jump of 41 has happened only in the last 9 years. Now, if you say why this happened, it shouldn't have happened because Nehru is not the Prime Minister. Please, for heaven's sake, let us raise this debate. I can go on and on. I have read books on Nehruvian blunders, beginning from the famous Himalayan blunder which Brigadier Dhalvi wrote after 1962. I have the same penchant to read books, but I'm not getting into that because that's not the case. This is something that each has to celebrate and we have to put our heads together. So, now, the whole day it has been Nehru. Now coming to, yes, wholesome, that's what I'm saying. Now coming to space economy. Because in the times to come, when we say in 25 years we will be at that pedestal, of course the value addition has to come from somewhere. Where will it come? It will come from those resources which have remained unexplored or underexplored. One is, of course, the huge ocean resource that I refer. The other is, of course, the Himalayan resource. We have vast Himalayan range, 3-4 states lying in the lap of Himalaya, beginning from Uttarakhand, Himachal Pradesh, etc. And Roma mission has also been
begun, which has given India a unique identity of a purple revolution and agri-tech startups. Now, in space economy, I have all the modesty to say we are not a very big economy as of today. No, I didn't wait for you to say that if Nehru was there, it should not have happened. I'm saying Nehru or no Nehru. We are only 8 billion. It is 8 billion economy today. We are 8 billion US dollar. But the second point is, we reached 8 billion US dollar in 70 years or 75 years. Our projection is that by 2040, we will be 40 billion. So, $8 billion in 75 years and a jump of up to 40 billion in next 15 years. And if you don't believe me that the projection is been quoted inappropriately, then very recently there was a report last week called ADL report. This Arthur D. Little report, one of these projectionists of the international agencies. They have said that even though India is projecting that they might reach 40 billion US dollar by 2040, but our anticipation is that they will go higher up to $100 billion. This is a projection made by a non-Indian agency because, according to them, India has started moving on a very fast track, which didn't happen earlier. Bharat has started moving on a very fast track, which didn't happen earlier. Now the world is recognizing this. When the Honorable Prime Minister was in Washington, D.C., it was the Americans who solicited that Indian astronauts should accompany them to the International Space Station. That means they believe the credibility of our astronauts. The Artemis Agreement was solicited by them. They also put the offer that we should be part of their semiconductor consortium. So, what I'm not talking anything subjectively. I'm talking of what the world is saying. Now, the point is that if you, and something to celebrate, like when we reached fifth economy, we were 10th economy in 2014. When we reached fifth economy, there was huge celebration across, except for some of the cynics. But I was pleasantly amused that celebration also because we had overtaken United Kingdom. Similarly, as was mentioned this morning, I think also by the Raksha Mantri, the same America, which took off much earlier than us, has today generated for us a revenue of 174 million US dollars by hiring our launching pads. And out of that, 157 million US dollars have happened only in the last 9 years, almost 90%. We were talking of Himalayas, we are talking of oceans. We have a huge resource of biodiversity. But, Honorable Speaker, sir, you know, in 2014, the number of biotech startups in India was only 50. 50. Today, it is 6,000. Our biotech economy, because we have entered into biomanufacturing. Now, in the next part, let's put our heads together and try to understand why this has happened. Because many of us don't feel comfortable that it has happened. Our biotech economy in 2014 was $10 billion. So in 70 years, 10 billion. Today it is 80 billion, 8 times higher in 9 years. So virtually 1 billion every year we have increased. And the projection is 150 billion by 2050. Now the question is, notwithstanding Nehru or not Nehru, something might have happened which the world says India has gone on fast track. जब कोई खिलाड़ी जो सुस्ता के चल रहा था, जिसको दुनिया बहुत संजीदगी से लेती नहीं थी, वो इतनी तेज रफ्तार दौड़ में आ गया
कि दूसरे लोग चौकन्ना हो गए तो आखिर पूछना तो पड़ेगा क्या बूस्टर खाया उसने, उसको कौन सा दूध पिलाया गया, उसको कहां से ऊर्जा आई। हम बात नहीं कर रहे किसी प्रधानमंत्री की, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ होगा या कोई जादू की छड़ी चली होगी। द वर्ल्ड टुडे इज लुकिंग अप टू अस। So the reason, space. Why had other countries progressed? Because they had not confined themselves only to the narrow domain of the public sector. And it's my belief also that time has come when the demarcation between public and private is going to vanish away. Today we have heavy engagement of the industry in ISRO. After the new policy came in 4 years ago, we have set up an interface agency called InSpace. InSpace, that stands for Indian Space Application Corporation, something like that, which coordinates between private sector and public sector. And the head of that is a person from corporate sector. He was working with one of the corporate houses, not a government person. नहीं वो भी आते हैं, that is different, वो भी आएंगे, that case, no, India has won that case, Dada, India has won that case. I am coming to that later on. I'll come to that. That is a legacy problem. Now, and then a new PSU has been set up called NSIL, New Space India Limited, to collaborate with the private companies, which has led to a sudden upsurge in investment. It's been thrown open. And coupled with this will be the National Research Foundation of India, of Bharat, which has been given a truly Bharatiya name called Anusandhan. So the name of Bharat's National Research Foundation is Anusandhan. And the hallmark is that nearly 80 or 75% of the budget would be from the non-government sources. If we have a 50,000 crore budget for 5 years, 36,000 crore will come from non-government sectors. It will be an umbrella body consisting of academics, scientists, researchers, huge presence of industrial representation. Also, sir, keeping the Indian context in mind, the Bharatiya context in mind, it will have representation from social sciences, from humanities, so that we do not lose out to our traditional ethos while deciding our future projects. And it will also decide what kind of collaborations do we engage in our foreign alliances so that we remain globally competitive. It will have a governing body, it will have an executive council, and the executive council will be headed not by a government secretary. Mr. Minister, just a minute. But by a principal Just secretary. a minute. The House was extended till 8 o'clock. I seek the permission of the House if we can extend it by another 1 hour. Sir, now. Thank you. So, what as an honest student of research, I am trying to understand what might have happened which has brought this quantum leap, which has generated a country worldwide interest in India. If there is something more to add, you can do that. But at least let's understand. It's not just for saying that now, since this is the government in place and this has happened, this government has taken some measures. It has provided an enabling milieu, which was lacking. We had no dearth of acumen. We had so much of commitment, as was rightly mentioned by one of the members here, that Sarabhai, when he was not given transfer facility, he carried the baggage on his carriage. But we did not. We gave him enabling environment so that they could put their potentials to the best use. Secondly, we were also, the deficiency was at the level of policy planning, at the level of the political leadership. We were waiting for other countries to come out with a new scientific application, use it when it became popular, then we suddenly woke up. For example, I mentioned in the other house also, television
just take that example. It happened in America in 1950s. Dada knows more than me. The 1960 debate, presidential debate, was the determining point between Nixon and John Kennedy. And suddenly John Kennedy turned the tables on Nixon on the basis of a TV debate. In 1960 here, we were wondering, what is TV? What is debate? Kahan hota hai screen, kahan se bolta hai? We had never seen, we had never heard. Here it came to close to 1970, that was also Chitrahar. That too somewhere in Delhi. In Tamil Nadu, sir, it came in 1975. The match happened. I was there. In Chepak, a test match happened. And the first time, a black and white television telecast was put up. So we waited 15 years for a new scientific innovation to be adopted in this country. Similar was the case with the computers. Today, look at quantum technology, which one of the members was mentioning. We are today among 3 or 4 nations, that league of elite nations, who are into quantum technology, and we have institutionalized it through mission, Indian Quantum Mission, or you can call it Bharat Quantum Mission, which was rolled out only 6 months back. Which government, which Prime Minister, it is for you to decide. It has happened now. In other words, it's a matter of pride for all of us. We are now not only have taken a giant leap, we are at the same level. And in certain ways, we are even ahead of others. If you take our medical science, again, going back to Premchandji's state, our Chitra there is producing medical equipment which is not only world class, which is cost effective. We have mastered this skill and shown it to the world. How to develop world-class space missions, world-class scientific equipment, world-class projects at a cost which is just 1/10 of the other cost. Yes, Sri Chitra. What I'm trying to say is something that all of us have to feel proud about. Now, if you go, before I conclude, some of the landmarks that has happened, if you talk only in this ways. During the last 9 years, we have not only confined ourselves to the launching of rockets. Rocket का launch होना अच्छा लगता है, एक अच्छा दृश्य बनता है. It is, seeing a spaceship going to moon is a very romantic scene. It's because it's part of our fantasy. We have grown up seeing that. But there is much more to space technology than this. Today, space technology has entered every Indian household. We have not confined ourselves only to the launching of rockets. आपका एग्रीकल्चर सेक्टर देख लीजिए, सारा स्पेस टेक्नोलॉजी से चल रहा है. सॉइल हेल्थ कार्ड चल रहे हैं. टेलीमेडिसिन ऑफ कोर्स इज देयर. स्मार्ट सिटीज, अनमैन्ड रेल क्रॉसिंग्स, रेलवे ट्रैक्स, रोड्स, ब्रिड्ज, डिजास्टर मैनेजमेंट. We are number 1 in the world as far as our disaster forecast and prediction is concerned. That again, because earlier on, only radar was used for weather and other forecasts. Now we have combined it with space technology. I'm not saying that this should not have happened earlier, or maybe these are also march of times which happens. But we have done it. Wherever we thought it could do it, we have done. We have done to the best of the ability. Which as the result of which is that our disaster inputs are now being received even by neighboring countries. In 2017, precisely on the 5th of May, a South Asia satellite was launched, which is popularly also sometimes called SARC satellite, which is providing inputs to all the neighboring countries, including Sri Lanka, Bhutan, Nepal, Bangladesh. Pakistan decided to remain out of it. It is to their disadvantage. And somebody said 600 crore is too much. The Raksha Mantri ji was trying to respond to that. I think the amount of money that we have saved simply by averting disasters
is much more than the amount spent on Chandrayaan. And Aditya is just about 380 crore. Similarly, of course, somebody already mentioned the world record of 104 satellites launched in one go. We have some of our space projects are being cited as role models across the world. One of them is Swamitva program. Swamitva is a very fascinating program by which you map the land's reforms. So it eliminates the revenue departments, eliminates corruption, brings in transparency. You don't have to approach a patwari or a tahsildar, you can yourself access. So combining space technology with drones. Similarly, the other program which is being cited as a role model is Gati Shakti. Gati Shakti is another program we started by this government a few years back, where you have multiple layers. Whenever you are starting a new project, automatically you get the information. Where lies what? The forest, is it forbidden? It is prohibited. What about the rail tracks there, the rail pipes there? So you don't waste time and money. So some of our success stories are in fact being now cited in the rest of the world as well. And if we go simply by the scientific feats as such, I think somebody said scientists have gone abroad because you are not providing them enough. Yes, they went abroad because you didn't have startup avenues for them. You didn't have new institutes for them. If somebody did a course in space, either he had to get absorbed in ISRO or remain unemployed. Today we have opened up that. And as a result, many of these young scientists are willing to come back, and seeing that, we have now started a program called Vaibhav program under Department of Science and Technology, where we facilitate the return of a young scientist who wants to come back, and if he wants to take up a government job, we even give relaxation in the age, the upper limit of age. We are conscious of that because now they are finding avenues here. In fact, now this is going to be reverse brain drain. This happened because they were, now I was referring to Mr. Premchand's institute in Trivandrum, 160 admissions, 100% placement, but where? 60% of them went to NASA because you didn't have a place to absorb them. Now many of them are becoming startups. They are finding their own means. And this is a whole ecosystem which has been brought by this government. This also includes the new education policy, which is also called National Education Policy 2020. I said the other day, this National Education Policy should have happened several decades ago. I'm not saying in Nehru's time, but it made us prisoner of our aspirations. Somebody objected to that. I explained why. Suppose my father wants me to become a doctor. I don't get admission after class 12. What do? I do BSc, either botany or zoology. Then after that, what do? Civil services. I don't get, what do? I do MSc. Try for a teaching job, UGC, university. Don't get, what do? Do PhD. This National Education Policy 2020 gives you the liberty to go by your aptitude, to go by your taste. As you evolve, you can also make a choice. After class 12, if I don't get the choice of my stream or my subject or my profession, which I can change my subjects. I can have economics and botany. I can have economics and literature. It has exit entry. I can leave the college and come back. Once, sir, Dada will be interested to listen. The Vice Chancellor of Cambridge University, about 5 years back, he was a professor of microbiology from the same profession, medical education. There the teachers don't retire in US. They carry on, like Dada continues. So here we have retired. So he's fond of me. Whenever he was here in India, he would call me up and I would go to see him. So he told me, Doc, I must compliment students from India. If I didn't have students from Bharat, my PhD would be closed. All my PhDs from India.
So when I came out, after having met him, there was another doctor with me. I said, what is a compliment or otherwise? He said, what do you mean? I said, the old gentleman doesn't know. In his country, a boy or a girl will go in for a PhD only if he or she has decided to devote the rest of the life to research. Here I go for PhD for a trophy. Get a PhD in biotechnology, come back and become a manager in a computer company. Nobody knows. This disconnect between education, learning and skill and the vocation you follow was happening because of the old education policy. And you produce a huge lot of population who came to be very infamously known as educated unemployed, sitting at dharnas outside all the political offices. So this whole ecosystem is what is going to change the entire face of India and make it globally much, much more acceptable, competitive. And when we say in the next 25 years, we will be reaching that spot. We have already started the journey. The world is looking up to us. Gone are the days when India was looking for cues, India was waiting to be led by others. Today, world is ready to be led by Bharat under the leadership of Prime Minister Modi. Thank you, Speaker sir. Thank you very much. Sri Adhir Ranjan Chaudhary ji. Dinner after 8 o'clock is a convention. Thank you, sir. Sir, already we have got a plentiful of rigmarole statements from our Honorable Minister. He has already journeyed from Alpha to Omega to convince us that everything in this dispensation has been going hunky-dory. But the ground situations are at variance with the congratulatory remarks in all respects strenuously made by Honorable Minister. See, the issue is that today we have been engaged ourselves in the discussions of Chandrayaan 3. Sir, you know that the space explorations of our country make all the Indians proud of it. And on 23rd August, the entire country was waiting with bated breath to observe the soft landing of Vikram on the surface of Moon. The lander modules, Chandrayaan 3, were deboosting, which reduced the orbit to 25 into 134 kilometers around the Moon. Then power descent began at 5:45 p.m., 27th August. A few terms of that landing also caught our imagination. A rough braking phase 1, second, attitude hold phase, third, fine braking phase, fourth, terminal descent phase. And there was a talking point across the nation that 15 minutes terror. So all the people of our country were praying to the God or to the Supreme Being to ensure the decent landing on the surface of Moon. We have observed vividly the horizontal position of the lander to vertical position before gentle descending. So certainly now
Vikram and Pragyan are in deep sleep. Certainly all the people of our country will be praying again for their waking up afresh. Certainly it will be our prayer also. Sir, first of all, I must propose to this government, to the minister and to the House, कि हमारे देश की राष्ट्रपति उनकी नेतृत्व में सारे इसरो को साइंटिस्ट जिन्होंने चंद्रयान 3 ये विजन सफल किए, उन सब के लिए एक समारोह सभा का आयोजन करें, जिसको हम कहते हैं कि फैसिलिटेशन, और ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाए, राष्ट्रपति भवन में किया जाए, और वहां हम सब एमपीज को बुलाया जाए, क्योंकि हम सब देशवासियों के साथ साथ तहे दिल से उन सारे हमारे साइंटिस्टों को संबर्धना देना चाहते हैं। क्यों हर चीज में हमारे देश की राष्ट्रपति जी को हमें नजरत देखने को मिलते? ये एक्सक्यूज मी, बताओ। राष्ट्र इन डिबेट को इन्फ्लुएंस करने के लिए राष्ट्रपति का नाम या उनका जानकारी इस सदन को नहीं देना है। ये क्यों सजेशन दे रहे हैं? ये बात राष्ट्रपति क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये क्यों सजेशन दे रहे हैं? 352(6) ये डेरोगेटरी है। ठीक है, अधीर रंजन जी, क्या ये कार्य राष्ट्रपति को बुलाए? क्यों हर चीज में राष्ट्रपति को नहीं लाया जाता है? ये डेरोगेटरी है। हेलो, मेरा है कि इसरो के सभी साइंटिस्टों का हमारे यहाँ प्रधानमंत्री और सभी के द्वारा सम्मान किया गया है, और जहाँ भी जरूरत पड़ेगी होगा, मगर पॉलिटिकल जो है स्टेटमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप अपना बात शुरू करो। काइंडली कन्फाइन टू द सब्जेक्ट। सर, इसमें गलती क्या है सर? मैंने कहते हैं कि हमारे राष्ट्रपति जी की अगुवाई में सारे इसरो की साइंटिस्ट को बुलाया जाए राष्ट्रपति जी भवन पे, वहां हम सब जाएं और सब मिलके हमारे साइंटिस्टों को हम संबर्धना दे। इसमें गलती क्या है, अन्याय क्या है, ये तो बताइए। हेलो, आपकी संवेदना से हम आपको उसका संज्ञान लेते हैं, मगर पॉलिटिकली स्टेटमेंट पॉलिटिकल नहीं है स्टेटमेंट। मैं दिल की बात करते हैं सर। हमारे प्रधानमंत्री जी, एक मिनट, मंत्री जी कुछ टिप्पणी करना चाहिए। अगर अधीर जी का सुझाव नोट भी कर लिया जाए तो प्रश्न ये उठेगा कि 17 साल नेहरू जी रहे, उन्होंने ही स्पेस का काम शुरू किया, फिर इंदिरा जी ने 1969 में इसरो कायम किया, सारा सुबह से आप बोल रहे हैं। तो एक बार अगर उस समय ये प्रेसिडेंस स्थापित कर देते तो आज चल रही होती। प्रेसिडेंट तो बनाने वाला एक ही आदमी है। नहीं, प्रेसिडेंट बनाने वाला एक ही आदमी है हमारे देश में। हेलो, इस प्रकार की टिप्पणियां मत करो, विषय पे आओ। बात यह है कि जब राकेश शर्मा ने स्पेस में घूम रहे थे, आपको याद होंगे, प्रधानमंत्री जी उस समय इंदिरा गांधी जी उनको ये पूछी कि राकेश कैसे लग रहे हैं ये हमारे हिंदुस्तान को देखने के लिए? तो उन्होंने जवाब में कहे कि सारे जहां से अच्छा। तो बार बार वो टोकते रहे, तो उनको साथ हमें समय बर्बाद ना करें। सर, मैं इसलिए प्रधानमंत्री जी की बात किए हैं, ठीक है, इसलिए राष्ट्रपति जी की जिक्र किए हैं। टिप्पणी करते हैं। राकेश शर्मा का मिशन हिंदुस्तानी मिशन नहीं था, वो एक सोवियत मिशन था।
वो अपनी कैपेसिटी में उसमें गए। जो गगनयान है उसका नट बोल्ट से लेकर के हमारा जो एस्ट्रोनॉट तक है वो हिंदुस्तानी होगा। ठीक है। अच्छा, रशिया से हथियार नहीं लेते हैं आप? आज की हमारे देश की जो हथियार फौजों के पास है, अधीर जी, 70% रशिया के मेड है। अधीर जी, ये पीछे जनरल सब बैठे हुए हैं, बीके सिंह सब बैठे हुए पीछे। रशिया से आप हथियार नहीं अपनाते हो? क्रायोजेनिक इंजन रशिया से नहीं लाते हो? ये हर बात में मैं तैयार हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एड्रेस टू चेयर। देखो, मंत्री करते हैं, मैं नहीं करते। मंत्री जी करते, मैं नहीं करते। ये मंत्री जी को तमीज सिखाना जरूरी है। सर, मैंने इसलिए ये शब्द रिकॉर्ड से हटाया जाए। ये शब्द रिकॉर्ड से हटाया जाए तमीज का। सर, मैंने इसलिए राष्ट्रपति के नाम जिक्र किया, इसके पीछे एक वजह है। मंत्री जी अगर ध्यानपूर्वक सुने तो मैं खुशी होंगी। मंत्री जी थोड़ा सुनो मेरे बात। माधवन, व्हाट एविडेंस आर यू गोइंग टू शो बिफोर द वर्ल्ड दैट वी रीच द मून? किसने पूछा था? एपीजे अब्दुल कलाम। हु वाज माधवन नायर? द चेयरमैन ऑफ ISRO. Prior to the launch of Chandrayaan 1 2008, डॉक्टर कलाम ने क्या कहा? डॉक्टर कलाम ने उनको सजेशन दी कि when we carried out mission to Everest and Antarctica, we placed our flag there. In the case of the moon mission, we are relying to convince the world with a lot of digital data. Don't you think we should do something more? राष्ट्रपति पूछ रहे हैं इसको, ISRO की चेयरमैन को। और ISRO की चेयरमैन कलाम साहब ये रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट थी। और ये माधवन नायर के अपने बयान है कि दैट दिस सिंपल वन क्वेश्चन modified his entire perspective, giving birth to the concept of the moon impact probe carried aboard Chandrayaan 1. That means moon impact probe Chandrayaan 1 की सबसे पहले चांद की सतह पर जो टक्कर मारी थी। Chandrayaan 3 lands on the moon today. We recall when India first planted a flag on the moon. दूसरी बात, अटल बिहारी वाजपेयी जी announced India's moon mission in his Independence Day speech 2003. This should be India's first foray outside Earth's gravitational pull and the most challenging task undertaken by the ISRO until then. 5 years after Vajpayee's announcement on October 22, 2008, a PSLV blasted off from ISRO's launch site at Sriharikota, beginning Chandrayaan 1's journey to the moon. The PSLV initially placed Chandrayaan 1 on a high elliptical orbit around Earth. Over the next 3 weeks, the spacecraft carried out some highly complex, extremely precise maneuvers to finally orbit the moon. India's maiden attempt to put a spacecraft into precise orbit around the moon was a complete success, but this was not enough. This was not enough because the MIP with the national flag inscribed on it comprised 3 instruments: a mass spectrometer, camera, altimeter. Sir, मैं क्यों राष्ट्रपति जी की बात कर रहे हैं आप सुनते जाओ. The MIP was scheduled to be dropped on the lunar surface on November 14, 2008. An hour before this sequence was to be initiated, Dr. Kalam entered ISRO's control room at Pune, Bengaluru. Nair depicted the scenario that I arranged spice buttermilk, his favorite, for him and explained the details of the mission. He went around
the newly built control room and appreciated the internal architecture as well as the sophisticated instrumentation. Naya writes about Kalam's visit. Dr. Kalam was excited to see the most modern setup and remarked that it felt as if he was in wonderland. मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2008 साल में India has entered the elite club of space exploration countries. Program, and you are complimenting APJ Kalam, Rashtrapati, for having taken a close follow-up, both of them elected by the BJP. Absolutely. I must appreciate it. Before returning to Delhi, however, he made a notable suggestion. Before returning to Delhi, he made a notable suggestion to name the impact site after Pandit Nehru, on whose birthday the landing was made and whose vision was crucial to the creation of ISRO. After receiving appropriate permission from the government, the site was named Jawahar Sthal. मैं इसलिए बोल रहा हूं कि डॉक्टर कलाम जी ने उनकी तरफ से ये सिफारिश की, उसके बाद जौहर स्थल बनी हमारी चांद की सियात में उस समय। ये कोई मैं बोलने हर बात पे अगर मोदी टोकते रहे तो कहां जाऊंगा? The difference, we did not name it Modi Point. We have named it Shiv Shakti Point and Tiranga Point. बहुत अच्छा किया। You made it Nehru Point and Jawahar Point. मैंने क्या किया? अब्दुल कलाम ने सिफारिश अब्दुल कलाम ने उनकी कहने पर होने no. It was the UPA government which cleared this decision. President Rashtrapati is no way privy to take this decision. The decision was taken by the then PMO headed by Dr. Manmohan Singh. No, don't mislead the House. No, I am not misleading the House. Department of Space is directly under Prime Minister's office, and the decision was taken by the then PMO. It was cleared. अच्छा ठीक है, बैठिए। अच्छा देखिए, there is a proverb that the crow sometimes the chicken crows as if because of his crowing the sun rises. मुर्गी बांग लगाते हैं और मुर्गी बांग लगाने के बाद जब सूर्योदय होते हैं तो मुर्गी सोचते हैं कि उनकी बांग पे ही ये सूर्योदय हो चुके हैं। मुश्किल आप लोगों के लिए यही है। See, India's सर बुरा मत मानिए, नेपोलियन बोनापार्ट के नाम सुने होंगे आप लोग। एक मिनट, नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू जंग में, अधीर जी, नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू के जब जंग हुई थी उसमें उनकी समाप्त हो गई, खत्म हो गई। तो उनकी आत्मा चंद्रयान पे आइए, उनकी आत्मा पुनर्जागृत होते हुए पहले अमेरिका सफर की। आप डेविएट हुए हैं, अमेरिका सफर जब करते थे तो नेपोलियन की आत्मा अमेरिका को देखने के बाद टिप्पणी करते हैं कि अमेरिका में इतना औजार है, असला है, अगर ये मेरे पास रह जाते तो वाटरलू नहीं होते। तो फिर घूमते घूमते इजराइल में आए नेपोलियन बोनापार्ट की आत्मा। तो इजराइल में आने के बाद उनकी ये टिप्पणी हमें सुनने को मिलता है कि अगर इजराइल जैसे खुफिया एजेंसी रहते हमारे पास, मोसाद जैसे, तो हमें कोई हराने नहीं सकते। धीरे धीरे वो हिंदुस्तान में आए और मोदी की जमाने के सारे दृश्य देखने के बाद उनको ये लगा कि अगर मोदी जी रहते, इवेंट मैनेजमेंट इस तरीके के होते रहते तो वाटरलू युद्धों की बात किसी को पता ही नहीं होती। अधीर जी आप विषय पे आइए। तो यही अधीर जी विषय पे आइए। सर, India's experience in rocketry began in ancient time when fireworks were first used in the country, a technology invented in neighboring China and which had an extensive two-way exchange of ideas and goods with India, connected by the Silk Road. Military use of rockets by Tipu Sultan during the Mysore War against the British inspired William Congreve to invent the Congreve rocket, predecessor of modern artillery rocket. In 1804, after India gained independence from British occupation in 1947, Indian scientists and politicians recognized
the potential of rocket technology in both defense application and for research and development. Recognizing that a country as demographically large as India would require its own independent space capabilities, and recognizing the early potential of satellites in the fields of remote sensing and communication, these visionaries set about establishing a space research organization. ये इसका इतिहास है। सर मुझे समय दीजिए क्योंकि मुझे बोलना है। सर ये इसका इतिहास है। सर in 1947 Homi Bhabha wrote to the then Prime Minister Jawaharlal Nehru to set up a separate branch of science for atomic energy. Shortly after the Atomic Energy Commission came into existence in 1948, Bhabha was in charge of that commission. Nehru famously said, it is science alone that can solve the problems of hunger and poverty, of insanitation and illiteracy, of superstitions and deadening customs and tradition, of vast resources running to waste, or a rich country inhabited by starving people, who indeed could afford to ignore science today. At every turn, we have to seek its aid. क्या हुआ सर? सर काफी समय हुआ है। काफी समय हुआ है। सर मैं ये कहना चाहते हैं, सुबह से हम सुनते आते हैं, मैं ये इंडियन स्पेस ओडिसी को बताना चाहते हैं, इंडियन स्पेस ओडिसी को कहना चाहते हैं। 1963 the first sounding rocket, Thumba Equatorial Rocket Launching Station in Kerala. 1969 the Indian Space Research Organization is founded. It replaces the Indian National Committee for Space Research set up by the government of India in 1962. 1975 the first Indian satellite Aryabhatta is launched into space from a Russian facility on April 19. The first Indian experimental remote sensing satellite Bhaskara-1 is placed orbit with TV cameras on board to study hydrology and forestry and geology. 1980 satellite launch vehicle, India's first experimental satellite launch vehicle, is successfully launched from Harikata. 1982 communication satellite INSAT-1 is launched. 1984 as part of joint Indo-Soviet mission, India cosmonaut Rakesh Sharma spends over a week at Salyut 7, a Russian orbital station. 1987, first developmental flight of augmented satellite launch vehicle failed to send SOS-1 into orbit. 1988, Indian remote sensing satellite IRS-I1 and communication satellite INSAT-1 are launched. 1992, ASLV successfully launches. 1993, PSLV fails to place IRS-I orbit. 1994, PSLV successfully launched. 1999, PSLV launches more than one satellite for the first time. 2001, the first developmental flight of GSLV inject GSAT-1 into a geosynchronous transfer orbit. 2002, PSLV launches India's first dedicated meteorological satellite Kalpana-1. 2003, PSLV puts IRS-PG P6 carrying a 1,360 kg payload into orbit. 2004, first operational flight of GSLV successfully launches. 2005, the first mission to take off from the second launch pad at Sriharikata. 2007, after significant hard work, PSLV successfully launches. अधीर जी बोलने दीजिए सर. हेलो सर हो गया. 2008, India's first lunar probe Chandrayaan is launched successfully aboard the upgraded PSLV XL. 2013, PSLV 25 flight launches. 2014, launch vehicle kindly conclude सर जल्दबाजी उनको इतना मौका दिए. मैं तो हमारे सारे विपक्ष की तरफ से बोल रहे हैं. 2016, ISRO successfully test पर स्क्रैमजेट इंजन. आपकी जमाने की बात करते हैं, आपको तो खुशी होना चाहिए. 2017, variant of LBM-3. 2018, second orbital test flight. 2019, 20, 21, 22, 23 ये सिलसिला चलता है. ये किसी एक सरकार की, कोई एक व्यक्ति की कहानी नहीं है. जिस तरीके से आप लोग भजोना कर रहे हैं ना, वो भजना करने की जगह ये नहीं है. हमारे जो साइंटिस्ट है, ये साइंटिस्ट की मेहनत से, इनकी पसीना से सर आज इस कामयाबी
पे हम पहुंच पाए हैं। ये सबको सराहना करना चाहिए। सिर्फ मोदी भजोना करने से नहीं ऐसा मत बोलो सर। पूरा सदन साइंटिस्टों का रिस्पेक्ट करता है। मैं पूरा सदन करता है। अध्यक्ष महोदय की बात मत करो। अध्यक्ष महोदय मैं लगभग 1.5 घंटा बोला हूं। मुझे बताया गया, मेरी प्रार्थना है उसमें गिना जाए कितनी बार मैंने मोदी जी का नाम लिया और कितनी बार इन्होंने नेहरू का नाम लिया। सर मैं आपकी ये तो बात सिर्फ नेहरू के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं। नहीं सर 2023 में नेहरू थे क्या? उनका भी जिक्र किया मैंने। 2023 के नेहरू है क्या? देखिए खत्म होने दो। नाउ बस हो गया। आई एम आस्किंग हिम टू कंक्लूड नाउ। सर एक मिनट, मुझे बुरा लगा डॉक्टर कि आप निकाल देंगे कि आप हमारे कलाम साहब को साइकिल पे जो रॉकेट रिकॉर्ड से निकाल देंगे निशिकांत जी। अच्छा अध्यक्ष महोदय नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक नई संस्कृति को जन्म देने का प्रयास किया है। अगर आप कुल मिलाकर के देखें, देश भर में कितनी संस्थाएं एक ही परिवार के नाम पर हैं, तो एक वो अपने में अलग कहानी है। कितने कॉलेज, हर कॉलेज का नाम उसी परिवार के नाम पर, हर विश्वविद्यालय का उसी परिवार के नाम पर, हर स्कूल का उसी के नाम पर, हर वैज्ञानिक संस्थान का उसी परिवार के नाम पर, इस हर एयरपोर्ट का उसी परिवार के नाम पर। इस मोदी जी ने उस प्रथा को, उस परंपरा को बदल करके एक नया तहजीब, एक नया वर्क कल्चर देने का प्रयास किया है। अधीर जी आप अभी कंक्लूड कीजिए। मेरी बात पे कितना बाधा हुई आप खुद देख लो सर। आप आगे बोलो। सर मैं ये कहना चाहती कि सुबह से संस्कार की बात हो रहे थे। सुबह से राजनाथ सिंह से लेकर हमारे जितेंद्र जी भी ये संस्कार की बात करते हैं। क्या हम संस्कार नहीं मानते? क्या हमारा संस्कार क्या है जानते हैं? हमारा संस्कार ये है, रुचिनांग बोचिता दीजू कुटिलो नाना पोतो जूशांग नीनु में को गम्मस्तोशी पयो समर न बोइबो। नदी की जन्म कहीं भी हो सकते, और नदी बर्फ पिघलने के बाद जब पानी में तब्दील होते, शहर, नगर, गांव, बंदर से गुजर कर समुद्र में जाकर मिलते। वो समुद्र नदी के लिए सच होता है, सत्य होते हैं। ये सत्य हिंदुओं के लिए ईश्वर है, मुसलमानों के लिए अल्लाह है, क्रिश्चियन के लिए ख्रिस्ट है, बुद्धिस्ट के लिए बुद्ध है। ये हमारा संस्कृति है। ये संस्कृति को मानने के चलते आपको आगे निकलना पड़ेगा। सर चलो सर, ये संस्कृति की बात करते हैं। इनकी कंक्लूड। They should not confuse science with superstition. They should not confuse culture with communalism. That is my suggestion to them. Sir, we can feel proud of what our country achieved in medical science at one point of time. We worship Lord Ganesha. There must have been some plastic surgeon at that time who got an elephant's head on the body of a human being and began the practice of plastic surgery quoted by Prime Minister. I do not know the name of the Prime Minister, but certainly the Prime Minister is a proactive, progressive Prime Minister. जिन्होंने ये कहा था। Conclude. Please conclude it. Sir, so इसलिए मैं कहते हैं। We have so many other speakers also. Sir, kindly sir, conclude. सर मैं काफी लंबा बोले। मैं संस्कार की बात करता हूँ। सर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर से ज्यादा बोले। सर हमारे गीता बोलते हैं, सर हमारे गीता बोलता है डॉक्टर साहब, आन भद्रा क्रद्भु यंतु विश्वते, आन भद्रा क्रद्भु यंतु विश्वते। सारे दुनिया की सारे ज्ञान अपनाओ, इसमें कोई शर्म नहीं करना चाहिए। हमारा देश जुग जुग से सारे दुनिया को अपनाया है, यही हमारा देश की महत्व है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक्सपांशन इज लाइफ, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ, लव इज लाइफ, हेटेड इज डेथ। Once more, the world must be conquered by India. This is the dream of my life. कौन कहता है? स्वामी विवेकानंद. And I wish that each one of you who hear me today will have the same dream in your minds and stop not till you have realized the dream. ये स्वामी विवेकानंद, यही हमारा संस्कार है। तो सर यहाँ मैं मंत्री जी को कहना चाहते, आप इंडेक्स की बात करते थे ना,
इतना You address to the chair and now conclude. Please conclude. सर, ये मैं इसलिए बताता हूं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है मंत्री खुद बताए, हमारे पॉवर्टी इंडेक्स क्या है मंत्री खुद बताए। आप कहते कि इसरो में राशि बढ़ा दिए हैं, नहीं। 10 साल पहले आज से आप 10 साल जूनियर थे, 10 साल बाद आज से आप 10 साल ओल्डर होगी। इसी हिसाब से बात करना चाहिए। हम लोगों को गुमराह करने के लिए बात न करें तो बेहतर होगी। द एलोकेशन फॉर ISRO's एनुअल बजट in 2023-24 stands 12,543 crore rupees. Shockingly, this amount reflects an 8% reduction compared to the previous budget, with a massive 32% slash in expenditure designed for space science initiatives such as Chandrayaan 3 and Aditya L1 mission focused on studying the sun. सर, आदित्य L1 के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। लगरंजी पॉइंट के पार करने जाते हैं, लगरंजी पॉइंट तक जाना चाहते हैं आदित्य 1। सर 127 दिन 28 दिन की वक्त लगेगी। 15 लाख किलोमीटर की सफर तय किए हैं, वो सक्सेसफुली गुजर रहे हैं। सब हम उसके लिए भी हम सब प्रार्थना करें कि उनकी यात्रा भी सफल रहे। सर, श्री रितेश पांडे जी, थैंक यू वेरी मच। अब खत्म करो। मैं राजनाथ सिंह को ये कहना चाहते हैं, सुबह राजनाथ सिंह हमारे धर्म और संस्कार के बारे में बार बार कहते थे। मैं ये कहना चाहता कि आइंस्टाइन समराइजेस द कोएग्जिस्टेंस बाय राइटिंग द साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। दैट शुड बी केप्ट इन माइंड। थैंक यू सर, थैंक यू। भारतीय संस्कृति क्या होता जानते हैं सर? राष्ट्र भारतीय संस्कृति बात करते हैं, अपने कमाओ अपने खाओ, ये प्रकृति है। दूसरे से लूटकर अपने खाओ, ये विकृति है। खुद कमाओ सबके खिलाओ, ये भारतीय संस्कृति है। थैंक यू श्री रितेश पांडे जी। अध्यक्ष महोदय, स्पीकर सर, मुझे धन्यवाद करना है अधीर रंजन जी का। दादा, मुझे धन्यवाद करना है आपका कि जिस सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में सुबह इस चर्चा का आगाज हुआ था माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा, आपने उसी मोड़ पर उसको ला करके समापन के लाया है। रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड एंड साइंस विदाउट रिलीजन इज ब्लाइंड, और संस्कृति को हाईलाइट किया। रितेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अधिष्ठाता महोदय। आपने मुझे आज चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, और साथ साथ बहन कुमारी मायावती जी का मैं आभारी हूं जिन्होंने मुझे इस भव्य सदन में पहुंचने का अवसर दिया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इतने हीटेड डिस्कशन के बाद एक शेर का पहुंचना यहां पे जरूरी है। कहिए तो आसमां को जमीन पर उतार लाएं, कहिए तो आसमां को जमीन पर उतार लाएं, मुश्किल नहीं है अगर कुछ ठान लीजिए। ये शहरयार साहब का एक शेर है, मुश्किल नहीं है अगर कुछ ठान लीजिए। आज ये शेर उन लोगों के लिए एक करारा जवाब है जिन्होंने भारत की उस वक्त आलोचना की थी जब भारत ने अपना ध्यान अंतरिक्ष की ओर केंद्रित किया था। उन्होंने कहा था, और मैं ये कोट कर रहा हूं, ये कुछ विदेशी पत्रिकाएं थी जिसमें मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि क्या जो देश गरीबी, असमानता, शौचालय की अपर्याप्त पहुंच से जूझ रहा है, क्या उसको अंतरिक्ष अन्वेषण पर ध्यान देना चाहिए? उस समय इस आलोचना का जवाब देते हुए इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई के कथन को याद करना जरूरी है। उन्होंने कहा था, कुछ ऐसे लोग हैं जो विकासशील देश में अंतरिक्ष गतिविधियों की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हैं। हमारे लिए उद्देश्य की कोई अस्पष्टता नहीं है। हमारे पास चंद्रमा या ग्रहों या मानव युक्त की खोज में आर्थिक रूप से उन्नत देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कल्पना नहीं है, लेकिन हमें आवश्यकता है कि यदि हमें राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रों के समुदाय में एक सार्थक भूमिका निभाना है, तो हम मनुष्य और सामाजिक वास्तविक समस्याओं के लिए
उन्नत प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग में किसी से भी पीछे न रहें। यह अत्यंत ही जरूरी था। आज भारत की अंतरिक्ष सोच से मिली सफलता इनके लिए एक करारा जवाब है और हमारी सफलता का एक परिणाम आज हमें देखने को मिल रहा है। आज देश को इसरो द्वारा अंतरिक्ष सोच से आपदा प्रबंधन, संचार प्रसारण में, हेल्थ केयर में, शिक्षा में, ग्रामीण विकास में, राष्ट्रीय सुरक्षा में, ऐसे कई क्षेत्रों में आज हमें सफलता मिल रही है। उनसे जो है निपटने के लिए हमें पहले से जानकारी मिलने का कार्य हो रहा है। अनुमान है कि अगले दशक में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की 10% की भागीदारी हो जाएगी, जो मौजूदा सिर्फ 2% पे है। ये एक दशक के अंदर इसरो की उपलब्धि होने जा रही है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, इंडिया ने उच्च स्तरीय स्पेस उपकरणों का निर्माण देश में ही करना शुरू कर दिया है और इसरो ने विदेशी सैटेलाइटों के अंतरिक्ष में भेजने से 144 करोड़ रुपया धन अर्जित भी किया है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे देश ने 381 उपकरण 34 देशों के लिए अंतरिक्ष में भेजने का काम किया है। यह हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। भारत में प्राइवेट सेक्टर भी स्पेस शोध और उपकरण निर्माण में आगे बढ़ रहा है। देश में प्राइवेट सेक्टर की लगभग 400 कंपनियां इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। लेकिन इस उपलब्धि पर गर्व करने के साथ साथ अब तक के कुछ अनुभवों को लेते हुए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। इस संदर्भ में कुछ चुनौतियों को संज्ञान में लेना चाहिए। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में शिक्षा, शोध, अनुसंधान के लिए निवेश बढ़ाने की जरूरत है। यदि हम अपने समकक्ष और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को देखें तो शिक्षा और शोध पर खर्च के मामले में हम अभी बहुत पीछे हैं। इसे अगर समय से नहीं सुधारा गया तो हमारी अग्रणी भूमिका को बरकरार रख पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बस मैं खत्म कर रहा हूं सर, ज्यादा समय नहीं, 2 मिनट और। देश में विज्ञान और तकनीक की संस्थाओं में निकलने वाली प्रतिभाओं का एक अच्छा खासा हिस्सा पलायन कर जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है और इसे कैसे रोका जाएगा या कैसे कम किया जाएगा, इस पर ध्यान देना जरूरी है। जैसा मैंने पहले भी बोला था कि हमें इस क्षेत्र में निवेश करने की जरूरत है और उसी के साथ साथ बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं जिसमें शिक्षकों के पद खाली हैं, वैज्ञानिकों के पद खाली हैं, टेक्नीशियन के पद खाली हैं। कभी कभी तो सुनने में आता है कि वेतन देने में देरी हो रही है और भत्ता देने में भी देरी हो रही है, समुचित मानदेय नहीं मिलता। ऐसी शिकायतें न पैदा हो, इसके ऊपर खासा ध्यान सरकारों को देने की जरूरत है। अंत में पुनः मैं इसरो को इस वैज्ञानिक अचीवमेंट के लिए, सफलता के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और सरकार से अपील करूंगा कि इसरो को कोई कमी न आने दी जाए। और अंत में मैं, जैसा कि यहाँ पे पूरे देश के साइंटिस्ट ने और हर जगह से उपकरण आए और देश के पूरे साइंटिस्टों ने इसमें भागीदारी निभाई है, मैं उत्तर प्रदेश से भी रॉकेट वुमेन के नाम से चर्चित ऋतु श्रीवास्तव जी का, धर्मेंद्र प्रसाद यादव जी का, सुमित कुमार जी का और आशीष मिश्रा जी का और आलोक पांडे जी का, हरशंकर गुप्ता जी का, तमाम लोगों का, उत्तर प्रदेश से आने वाले लोगों का पूरे देश की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अंबेडकर नगर में भी इन सब लोगों के अचीवमेंट्स को देख के ऐसी प्रतिभाएं निकलना शुरू हो गई हैं। अंत में एक शेर के साथ खत्म करूंगा सर कि जमीन से आसमां तक, आसमां से लामकां तक, जरा परवे मुश्त खाक तो देख कहां तक जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। श्रीमती जी माधवी जी। Thank you, Chairman, sir, for this great opportunity to speak in this new and very beautiful Parliament House. Sir, on this auspicious moment, I feel very happy to express our great achievement of Chandrayaan 3 success by the ISRO scientists under the leadership of Sri Somnath and his team, and also the great support of our dynamic Prime Minister of India. Sir, because of soft landing on the lunar surface, India becomes the first country to land a spacecraft on the moon's solar region, south polar region, on the August 23rd, 2023. The primary goal of landing a spacecraft on the moon will also conduct scientific experiment
to study the moon's environment, including its history, geology, and potential for resources. Through this mission, India will not only access to wealth of knowledge about lunar surface, but also potential for human habitation in the future. I congratulate the entire ISRO for the success of the Chandrayaan 3 because this achievement, our country entered an elite club of nations achieving such a feat, the others being the USA, China, and Russia. This achievement will also help the India boost its share in the global space business. Currently, our share in the global space business only 2% in the $600 billion industry. Now, India's space program becomes self-reliant. ISRO has created history because of ISRO scientists' hard work, courage, commitment, and their achievement, inspiring the 140 crore people of our nation and also young generation of our country. Sir, as we celebrate ISRO achievement, let us also recognize the need for continued support of investment in the field of space research. Increased investment in the space sector, more collaborations, establishment and upgradation of scientific education institutions will result in enhancing our space research and operating capabilities. By doing so, we can look forward to even more groundbreaking achievements in the future, further elevating India's status as a global space superpower. Thank you for giving me this great opportunity, sir. Thank you. Thank you very much. Shri Sukanta Majmundar ji. आपने मुझे इस नए हाउस में और बहुत ही सुंदर हाउस में चंद्रयान पर बोलने के लिए मौका दिया और एक जो चंद्रयान की सफलता है, ये सफलता हमारे देश के लिए एक अभूतपूर्व सफलता है। देखिए, किसी भी देश को जाना जाता है कि वो साइंस में कितना आगे है, इनोवेशन में कितना आगे है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश साइंस और इनोवेशन के तरफ आगे बढ़ रहा है। कुछ लोग जो बोलते थे कि जो लोग मंदिर बनाते हैं उनको साइंस नहीं आता, मोदी जी ने प्रूव कर दिया जिनको मंदिर बनाना आता है वो चांद तक भी पहुंच सकता है, चांद तक हम जा सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ देशों के फ्लैग में चांद होता है और कुछ देशों का चांद में फ्लैग होता है, और भारतवर्ष उस देशों में 4 गिने चुने देशों में पहुंच गया जिन्होंने चांद में पहुंचा। और साउथ पोल, जिसे सबसे डिफिकल्ट, इट इज कंसिडर्ड द डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द मून, एंड इंडिया रीच देयर, एंड ये हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि की बात है। मैं डेटा देख रहा था, हमारी सरकार की काम के वजह से इंडिया आज 41 रैंक में है, 41 रैंक में है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, जो 2015 में 2015 में हम 81 में थे जब कांग्रेस की सरकार छोड़ के गई थी। मोदी जी ने उसको 41 तक ऊपर पहुंचाया है। आज हमारे साइंसदान, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, मैं पहले उनका शुक्रिया करना चाहूंगा, और सारे देशों के हर पार्ट्स का साइंटिस्ट इसमें पार्ट लिया। और जैसे शशि थरूर जी आज सुबह बोल रहे थे, छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस, whether it may be a engineering institution, whether it may be a small college in which some people studied physics, they have also contributed in this mission. बंगाल की बात करें तो जो बंगाल का उत्तरी पार्ट है, नॉर्थ बंगाल, जिसे सबसे पिछड़ा समझा जाता है, उसी नॉर्थ बंगाल से अनुज नंदी, कौशिक नाग जलपाईगुड़ी से, उसके साथ साथ बाकी हिस्सों से सुजय दोलोई, अमरनाथ नंदी, साइंटिस्ट एस शर्केल, निरंजन कुमार और मुकुंद कुमार ठाकुर, ऐसे बहुत सारे जो हमारे युवा साइंटिस्ट हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। यहां तक कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था 2010 to 13, उसी कॉलेज का एक फिजिक्स का स्टूडेंट इस मिशन से जुड़ा हुआ है।
तो भारत का ये अपना मिशन है, जिसे मोदी जी ने हमेशा जो बोला है आत्मनिर्भर भारत, वो आत्मनिर्भर भारत के जो सपना मोदी जी का है, ये चंद्रयान उसका एक जीता जागता सबूत है। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश जैसे आगे बढ़ रहा है, उसी हिसाब से हम साइंस में भी, इनोवेशन में भी आगे बढ़ रहा है, जो डेटा दिखाता है। उस दिन जिस दिन रोवर ने 23 अगस्त को चांद के सीने में हमारे देश का अशोक स्तंभ का जब चित्र बना दिया था, उस समय पूरा देश का सीना 56 इंच बन गया था। पूरा देशवासी 56 इंच का सीना लेके खड़ा हुआ था कि भारत भी कर सकता है। हम में भी काबिलियत है और हर एक में काबिलियत है। हमारे जो मित्र है, जो संस्कार और कुसंस्कार की बात कर रहे थे, सुपरस्टिशन की बात कर रहे हैं, अधीरता भी बात कर रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि है गणेश जी का सिर है, प्लास्टिक सर्जरी का उदाहरण है। संस्कृति क्या डिफरेंस है, ये हमें समझना है कि अधीरता को याद आ जाता है कि प्रधानमंत्री गणेश जी को लेकर क्या बोले हैं, ये याद नहीं आता कि मोनिका बेस्रा नाम की एक महिला का ट्यूमर किसी के हाथ देने से वो खत्म हो जाता है और उस महिला को सेंट घोषित किया जाता है, उनका नाम अधीरता को याद नहीं आता। ये संस्कृति में डिफरेंस है। और ये चंद्रयान का जो सक्सेस है, ये हमारे साइंटिस्ट और जो हर जगह में काम कर रहे हैं और देश को आगे ले जाने के लिए इनको इंस्पिरेशन मिलेगा। आप जितना भी पढ़ ले, लिख ले, जब तक अपने ऊपर गर्व नहीं होगा, आप देश के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, कुछ बड़ा नहीं कर सकते। कॉपी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन साइंस में यूनिकनेस लाने के लिए पहली बात कंक्लूड करता हूं सर, कि पहली बात आपके अपने ऊपर, अपने सामर्थ्य के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए। और दो बात बोल के मैं खत्म करना चाहता हूं कि कभी हमारे जो मेडिसिनल साइंटिस्ट थे, मैं साइंटिस्ट ही बोलता हूं, उन लोगों को ऋषि बोला जाता था, उन्होंने एक मंत्र की रचना करी थी, आमंत्र अक्षरम नास्ति नास्ति मूलो मनौषधम अयोग्यो पुरुषो नास्ति जोजकस्तत्व दुर्लभ। अगर इसका मतलब निकाला जाए कि ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिससे मंत्र नहीं बना सकता। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, यदि सभा की सहमति हो तो सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए बढ़ा दी जाए। थैंक यू। हाँ, फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू कंक्लूड। तो इसका मंत्र का मतलब है कि हर अक्षर से मंत्र बन सकता है, हर आदमी में पोटेंशियल है, आपको जोजक ढूंढना है। तो इस नीति को सामने देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। और उसी के साथ इस घटना के बाद सारे देश ने कांग्रेचुलेट किया, लेकिन सबसे अनोखा कांग्रेचुलेशन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की तरफ से आया। उन्होंने बताया कि राकेश रोशन चांद में गया था। अब तब से मैं ढूंढ रहा हूं ऋतिक रोशन एक बार मिल जाए कि उनसे पूछ लूंगा कि राकेश रोशन जी कब चांद पे गए थे और उन्होंने चांद पे जाके कौन सा फिल्म का शूटिंग किया था। थैंक यू वेरी मच। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उनके दूसरे दिन उन्होंने इंदिरा गांधी जी को भेज दिया चांद पे, बोला इंदिरा गांधी चांद में गया था। थैंक यू वेरी मच। कांग्रेस वाले अधीर श्री सुशील कुमार रिंकू जी, थैंक यू वेरी मच। सर, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਸਫਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ पूरे वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹੈ ਇਸ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰ ਚੰਦਰਯਾਨ ਦੀ
ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਚੰਦਰਯਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਉਸ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਡਾਟੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਯਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮੱਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਮਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ, ਉਸ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੰਦਰਯਾਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ISRO ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 4000 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਰ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਣਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ UP ਹੈ, ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ, ਸਰ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਉੱਥੇ ਮਾਨਿਅਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਲਰ, ਪਾਉਂਡ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। Sri DM Kathir Anand ji. Honorable Speaker, sir, today we gather here in this temple of democracy to celebrate the triumph not just for India but for all humankind. The success of Chandrayaan 3 mission is a monumental milestone. As a proud Tamils, we have an extra layer of joy and pride in achievements of our country in the realm of space exploration. The Tamil people have a rich history of pioneering in various fields, and today we see that same spirit reflected in the advancements India has made in space. Many from our community have been a part of this grand endeavor, contributing with their expertise
knowledge and passion. The poetic beauty of our ancient Tamil literature speaks of the Panchabhutangal, that is, Neer, Neruppu, Nilam, Kaatru, Agayam. Humans have the ability to conquer all five and go greater deeds to the future generations. Today, it fills our hearts with joy to see that the dreams once written in the verses by our ancestors are now being realized as we reach out to the stars. The journey of Chandrayaan 3 is not just about reaching the moon, but also about the journey of countless minds who dare to dream. It is about the collective spirit of India and a special touch that the Tamil community adds to this vibrant tapestry. In a world where technological prowess defies the future, it is heartening to see our nation with the significant contributions from Tamil leading the way and carving our place in history. Congratulations to everyone for this success. The space science has got a unique space in the ancient India. From Aryabhatta to Abdul Kalam, the contributions of India to the space science is monumental. Our pride in the success of Chandrayaan 3, not just by a moment of joy. Let it be the stepping stone for our younger generation, inspiring them to a big dream, aim high, contribute passionately to every evolving story of our great nation. The success of Chandrayaan 3 is an exceptional feat, not just for India, but for all of humanity. It stands as a testament to the power of human perseverance, innovation, and collaborative spirit. In a world that often sees nations divided, it is heartening to witness the unification of people across the globe coming together to applaud India's space prowess. Chandrayaan 3 mission has not only expanded our understanding of our only natural satellite, the moon, but it also showcases how far we have come in mastering the art of space exploration. The name Chandrayaan literally translates mooncraft, and just as the name suggests, this craft has been instrumental in carving India's signature on the lunar surface. With this mission, India has once again demonstrated its commitment to the pushing boundaries of science and technology. Dedication, hard work, and relentless pursuit of excellence displayed by all Indian Space Research Organization, ISRO, and its team of scientists, engineers, and support staff are nothing short of inspiring. But beyond the technological marvel, there is a bigger story to tell. It is a story of hope, determination, and belief that no dream is too expensive to achieve. The success of Chandrayaan 3 is a reminder to every child gazing up at the stars that their aspirations, no matter how distant they seem, are always within the reach. This mission has shown the seeds of curiosity in millions, igniting imaginations and inspiring future generations to a dream even bigger. The ramifications of such success are manifold. Beyond the scientific knowledge we gain from studying the moon, the advances in technology trickle down to the benefit of various sectors: healthcare, communication, transportation, and beyond. Furthermore, it fortifies India's position as a leader in the global space community, paving the way for even a more ambitious ventures in years to come. Let us take a moment to appreciate every single person who contributed to making the Chandrayaan 3 mission a roaring success. This is through their tireless efforts, sleepless nights, and unparalleled passion that we stand here, looking towards the stars with a renewed hope of excitement. The Chandrayaan 3 mission is not just a story of success for India, but a beacon of inspiration for the entire world. Thank you, sir. Thank you very much. Sri Asit Kumar Malji. Honorable Chairman, sir, many thanks for giving chance to say something. Mr. Saugato Rai, senior most member of Parliament, he told details about Chandrayaan 3. I am fully agreed with him. Sir, yet I want to say one word. I would like to convey my heartiest congratulations to the scientist ISRO. Sir, the success of Chandrayaan 3 has raised our country
on a glorious position in the world. I would like to draw a kind attention of the Honorable Prime Minister in order to look in the problems of the scientists, ISRO, especially as if they do not suffer from monetary problem. सर, बहुत खुशी के बात है, वेस्ट बंगाल कॉन्स्टिट्यूंसी है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां से एक साइंटिस्ट विजय कुमार दाई चंद्रयान 3 में काम करता है। हमारा जिला बीरभूम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसका एमपी प्रेजेंट है सर शताब्दी राय। तीनों साइंटिस्ट चंद्रयान 3 में काम करते हैं। सोमजीत चटर्जी, मुशर्रफ हुसैन, दीपज्योति धौर, एक खूब गर्व का विषय है। सब साइंटिस्ट का साथ ये चोरो साइंटिस्ट को फिर एक बार बहुत अभिनंदन करता है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। श्री राजू बिष्ट जी। धन्यवाद सर। नाम लेके कौन क्या बोल रहा है? आपका बहुत धन्यवाद सर, चंद्रयान पे बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया। योजना हो या चंद्रयान की योजना हो, सफलता के साथ जो है, बट चंद्रयान की सफलता ये मानवता के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। सर, मैं अधीरदा को बहुत गंभीरता से सुन रहा था। वैसे मैं उनसे उम्र में छोटा हूं और अनुभव भी बहुत थोड़ा है, बट फिर भी बैठे बैठे एक चीज मैं जो कोपरनिकस थे उनसे 1000 साल पूर्व ही ये बता दिया था कि पृथ्वी गोल है। और सर, मैं एक दो चीज आपके सामने लॉन्च किया, हमसे कन्वर्ट हुआ और इसरो ने अब तक जो है 90 सैटेलाइट मिशन लॉन्च किए और इसमें से 48 स्पेस मिशन मोदी जी के समय में कार्यकाल में 9 वर्षों में हुए हैं। और इसरो ने ही पिछले 9 वर्षों में जो 48 स्पेस मिशन लॉन्च किए उसमें से जो है 424 सैटेलाइट साथ लेकर के गए थे। सो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगर हम भारत सरकार का बजट भी देखें, 2013-14 में जहां 5615 करोड़ हुआ करता था, 2023-24 में बढ़ के 12500 करोड़ से अधिक है। और कई सारे फॉरेन सैटेलाइट भी जो है इसरो ने लॉन्च किए हैं। 3000 करोड़ से ज्यादा की आमदनी हुई है और यह आमदनी पिछले 9 साल में करीब करीब उसका 90% हिस्सा जो है पिछले 9 साल का ही है। सो ये बहुत सारी उपलब्धियां रही सर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। और मैं ये जरूर के थे और कौशिक नाग जी जो जलपाईगुड़ी के थे, ऐसे तमाम लोग जो है पश्चिम बंगाल से भी इसरो मिशन के जो है टीम के हिस्सा रहे। अगला हमारा टारगेट जो है गगनयान है। लेकिन सर, मैं बंगाल की दृष्टि से एक दो विषय जरूर रखना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है बंगाल के हमारे सब टीएमसी के सांसदों ने भी रखा और हम सबको भी गर्व होता है कि बंगाल की इतनी बड़ी भूमिका रही और इतने बहुत अधिक संख्या में जो है उनका इस टीम में योगदान रहा। लेकिन आज बंगाल के सरकार को ये चिंतन और अध्ययन करने की आवश्यकता है, जो आज के युवा पीढ़ी को जिस तरह का संस्कार हम डाल रहे हैं, क्या आने वाले समय में भविष्य में वो गरिमा पश्चिम बंगाल की रहेगी क्या? आज देखिए, पश्चिम बंगाल जाना जाता है बम के लिए, बारूद के लिए, हिंसा के लिए, हत्या के लिए, महिलाओं के ऊपर जो अपराध होते हैं उसके लिए, तुष्टीकरण के लिए, परिवारवाद के लिए और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के लिए। और मैं ये बहुत गंभीरता के साथ बोल रहा हूँ। प्लीज सर, बस 2 मिनट बोलने दीजिए। मैं ये गंभीरता और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अर्जुन दा वहीं बैठे, सबसे ज्यादा भुक्तभोगी तो वही है, उनसे पूछ सकते हैं वो। और इतना ही नहीं सर, आज पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता यहाँ बैठे हैं, वो जवाब दे, 50% से ज्यादा यूनिवर्सिटी में रेगुलर वाइस चांसलर नहीं है।
8,500 से ज्यादा जो है स्कूल पश्चिम बंगाल में बंद हो रहे हैं क्योंकि टीचर को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। जो टीए है सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है, ये वास्तविकता है। और सर एक बात और, कृपया समाप्त कीजिए। सीपीएम ने 35 साल तक बंगाल में शासन किया। थैंक यू। सीपीएम ने श्री जसबीर सिंह चिल्लाने से अब बैठ जाइए। जसबीर सिंह गिल जी। धन्यवाद चेयरमैन साहब। आज मैं बधाई देता हूं पंजाब वासियों की तरफ से, हमारे देशवासियों को, इस देश को, हमारे साइंसदानों को और हमारे पंजाब के साइंटिस्ट जो महेंद्र पाल सिंह जी हैं, जो इस चंद्रयान 3 मिशन में शामिल रहे, उनको कि ये देश के लिए एक गौरवमयी समय है। आज हम इसका जश्न मना रहे हैं। हम जश्न चंद्रयान 2 का भी जरूर मनाएंगे, चाहे वो मिशन विफल हुआ, मगर उसमें एक नियत साफ थी, एक साफ मेहनत की थी हमारे साइंसदानों ने। मैं आओ जश्न मनाएं चंद्रयान 1 का, वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो मैं ये भी जश्न मनाना बनता है कि हम एक फूड डेफिसिट देश होते हुए पंजाब के मेहनती किसान की वजह से आज हम फूड सरप्लस हुए। आज हर सरकार आई, हर प्रधानमंत्री आया, उन्होंने अपनी योग्यता और क्षमता के मुताबिक काफी योगदान इस देश को मजबूत करने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए किया। जवाहरलाल नेहरू जी ने डैम्स, आईटी, आईआईएम बनाए और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने वो एक हरी क्रांति जो लाल बहादुर शास्त्री जी लेके आए। इंदिरा गांधी जी जिन्होंने पाकिस्तान को निस्ताबूद कर दिया, और हमारे उनके बाद राजीव जी जिन्होंने एक टेलीकॉम और एक जो गाड़ियों में वो क्रांति लेके आए। नरसिम्हा राव जी जिन्होंने हमारा कितना बड़ा ये काम किया, और एक बार फिर जो आईटी क्रांति है उसका उन्होंने झंडा उठाया। वाजपेयी जी, उन्होंने दूसरा जो परमाणु परीक्षण किया और जो मार्ग है या सड़क मार्ग है उसको बनाने में योगदान डाला। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जिन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, मनरेगा जैसे बड़े काम किए। यहां तक कि जब सारी दुनिया जो है इकोनॉमी में नीचे जा रही थी, उन्होंने देश को संभाल के रखा। नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने इन्होंने जो भव्य सदन दिया और जो चंद्रयान 3 का काम किया है, सभी लोगों ने किया है। सो मैं एक बात बताना चाहता हूं, हमें इस पे रुकना नहीं चाहिए, हमें इससे और बढ़ना चाहिए। आप बड़ी दोनों पक्ष, विपक्ष ने दोनों ने काफी एक बातें कही। एक तो थी कि 2013-14 में इसरो का बजट 5600 करोड़ था और आज 12,000 करोड़ है। 2013-14 के बाद अगर महंगाई की दर लगा लो तो ये भी उतना ही बनता है। हमें इस पे भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमें और मेहनत करनी चाहिए। ये हमारा जो महान देश है, इसमें ग्लेशियर, पहाड़, हिमालय जैसे, इसमें इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल जैसी नदियां हैं, इसमें पंजाब जैसे खेत खलियान है, थार जैसा डेजर्ट है। यहाँ पे आप हरमंदर साहब जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, वाराणसी में राम जी का मंदिर बन रहा है, यहाँ अक्षरधाम मंदिर है, वो ये अजमेर शरीफ जो हमारे राजस्थान में है, गया में बौद्ध धर्म का कितना बड़ी जगह है। मैं समझता हूं कि हम टूरिज्म में बहुत पीछे हैं। दुनिया में सबसे सेकंड हाईएस्ट जो है वो टूरिज्म जो है वो नौकरी दे। सर मैं जल्दी कंक्लूड कर दूं, तो वो नौकरी प्रदान करता है,
सरकार को जो टैक्स देता है। सो मैं समझता हूं कि टूरिज्म में हम काफी अभी पीछे चल रहे हैं। मेरी सर एक बेनती है कि आज हमें चारों तरफ से खतरा है, आज दो तरफ से दुश्मन बैठा है, तो हमें पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, हमें ड्रग्स के लिए सबको एक कतर होके ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। ये मत सोचना कि कोई स्टेट बच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक मिनट में सर ये स्टेट कोई बच जाएगा, ये हमारे सारे सभी की जिम्मेवारी है और हम सबको इस पे बह के रणनीति बना के इस लड़ाई को लड़। मगर उनको बोलने दो, आप बोलिए। आप कृपया बैठ जाइए, आप बोलिए श्याम सिंह जी। माननीय कि आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया। मैं विमेन रिजर्वेशन बिल पर नहीं बोल पाया किसी वजह से। एक लाइन कहना चाहता हूं कि चंद्रयान ने तो सॉफ्ट लैंडिंग किया, लेकिन विमेन रिजर्वेशन बिल ने पिछड़ों पर और माइनॉरिटी पर बहुत। मैं एक लाइन में बात करता हूं कि आई डिमांड सब कोटा एमंग कोटा फॉर विमेन रिजर्वेशन। आई डिमांड। अब चंद्रयान पे बोलो। चंद्रयान पर आता हूं। ये स्पेशल सेशन बुलाया गया, अच्छी बात है तारीफ करवाने के लिए, लेकिन मुझे और खुद बहुत अच्छी चीज थी और शायद हम सभी लोग समझते हैं कि ये एक आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं, इटली में जाते हैं खाने के लिए, तो तरह तरह की डिश होती हैं और उसको जो शेफ है, आप मिनट तो टाइम दीजिएगा, वो शेफ जो है तमाम डिशेज के अलावा एक डिश बनाने के लिए छोला बनाएगा तो रात को भिगाएगा, बुखारा दाल बनाएगा तो रात को भिगाएगा, क्या क्या कितनी मेहनत के बाद वो डिश बनाता है। और उसको जब हम खाने जाते हैं तो एक वेटर परोस देता है उसको। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्रेडिट किसको जाएगी खाना बनाने की? शेफ को जाएगी या वेटर को जाएगी? ये मैं पूछना चाहता हूं। अब मेरा इशारा काफी है समझने के लिए, तो मैं तो जिस तारीफ करने के लिए बुलाया गया है वो मैं तारीफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी अधीर रंजन जी चौधरी जी ने कहा साल टू साल, परत टू परत, लेयर टू लेयर, इसका जो आधार जो बेस खड़ा किया वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने खड़ा किया, यूपीए गवर्नमेंट ने। और आज आप चल करके झूठ मूठ में मुफ्त में उसका वो लेने चल रहे हैं। झूठ एकदम जो होने की उम्मीद करता हूं माननीय अध्यक्ष जी। झूठ शब्द कतई अनपार्लियामेंट्री नहीं है माननीय अध्यक्ष जी। मैं आपसे बहुत न्यूट्रल होने की उम्मीद करता हूं। मैं केवल अपनी एक बात कह के खत्म करता हूं कि इस चेयरमैन यस सोमनाथ जी, उनकी साइंटिफिक टीम और वो तमाम उस इसरो के और स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए तमाम लोगों को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। असल में वो जो है मुबारक के बधाई के पात्र हैं। और मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती रमा देवी जी। लाइट तो जला दीजिए। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नामाकरण कर दिए। आज सब कोई को मौका मिल गया ये शिव शक्ति के नाम से जाने जाने वाला चंद्रयान 3 पर। और लोग की भावना, लोग के विचार सदन में जो लोग बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि प्रत्येक आदमी को बोलना है। इस विषय को जानकारी जैसे मिला, अंदर में उत्साह हो गया। लेकिन जो ये काम करने की भावना हमारे प्रधानमंत्री जी के अंदर आया, वो प्रधानमंत्री जी
जिस नियत से, जिस मन से, जिस भावना से काम करते हैं वो देखता है दुनिया। आज 9-9.5 बरस में जो जो काम किए हैं सफलता मिली है, और भाव भी ठीक है, भावना भी ठीक है, और ये से धरातल पर उतारने की क्षमता भी ठीक है। तो लोग तो खामियां निकालेंगे, लेकिन हम तो उनमें खूबियां दिखते हैं। तो जो आदमी खामियां निकाल रहे हैं और जो देखकर सोच रहे हैं कि ऐसा काम हम करते लेकिन 60 वर्षों में नहीं हुआ, आज हम लोग जो देख रहे हैं इसको अक्षर सा पालन करने के लिए हम सोचते हैं कि लोगों को समझदारी में भी आना चाहिए कि प्रधानमंत्री का विचार कैसा है। हम ये देखते हैं कि जो सफलता का महत्वपूर्ण पल, मैं भी गर्व से यहाँ पर खड़ी हूँ ताकि हम सभी मिलकर एक ऐतिहासिक पल के बारे में चर्चा कर सके, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये यशस्वी नेतृत्व के हमारे देश के वैज्ञानिकों के मेहनत का परिणाम है। तकनीकी क्षेत्र में बल्कि विश्व भर में हमारे वैज्ञानिकों का मेहनत एवं विजय की मान्यता देने के लिए है। यह मिशन हमें सिर्फ चंद्रमा के पास ले गया, बल्कि भारत की आत्मविश्वास और वैज्ञानिक के सामर्थ्य पहुंचाया है। हमारे देश के वैज्ञानिकों हमारी शक्ति बनाए, खाना बनाए, ये करे, लेकिन आज के दिन में हमारे प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति का जो महत्व दिए, उनका अधिकार जो दिए हैं, वर्षों से लोग सोच रहा था, देख रहा था, केवल बात बनाने ही के लिए हमारे अधीर रंजन जी तो इतना बात बनाए कि मुर्गी बाग देती है, और ये भी पता नहीं है कि मुर्गी बाग देती है कि मुर्गा बाग देता है। अब क्या स्त्रीलिंग पुल्लिंग इनको समझाए, अभी वो थोड़ा शिक्षा ले ले अच्छा से, अच्छा रहेगा। जिन्होंने इस कठिनाई भरे मार्ग पर अपनी सीमाओं को पार कर दिखाया है कि आगे बढ़ना संभव है, यह वैज्ञानिक हमारे देश के गौरव है। उनकी मेहनत एवं संघर्ष का हम सभी समर्थन करते हैं। यह क्षण 140 करोड़ भारतीयों का समर्थन मिल रहा है। यह क्षण भारत की नई ऊर्जा, नई चेतना का है। यह क्षण भारत के उदीयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की बेला में अमृत वर्षा हुई है। यह सबको को महसूस हो रहा है कि अमृत काल ऐसे ही नहीं कहा गया है, इसमें अमृत की वर्षा हुई है। प्रत्येक आदमी इसको लेने के लिए तैयार है। यह सदन, नए सदन में आकर लोगों ने अपना विचार दिया है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। यह करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। यह उपलब्धियां भारतीयों को गर्व महसूस कराने वाली है। महोदय, भारत कृषि प्रधान देश है और चंद्रयान 3 की कामयाबी भारत की उपलब्धि के रूप में देखी जानी चाहिए, क्योंकि स्पेस में भारत जैसे ताकतवर होते जाएगा, कृषि क्षेत्र को खूब फायदा मिलेगा। जो आज लोग कहता है कि हमको ये कमी है, ये भूखे मर रहे हैं, थाली में रोटी नहीं है, ये सारे उपाय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, कैसे कैसे उपलब्धि हो। इसरो दुनिया में अपनी किफायती कमर्शियल लॉन्चिंग के जाना जाता है। चंद्रयान 1 ने चांद का पानी खोजा। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी काम कर रहा है। उसी ने चंद्रयान 3 के लिए लैंडिंग साइट खोजी। इसके अलावा मंगल यान पर परचम तो पूरी दुनिया देख चुकी है। इससे दुनिया में यह संदेश गया है कि भारत के पास वो क्षमता है जो कम बजट और कम संसाधनों में भी वह काम कर सकता है, जो बड़े बड़े देश नहीं कर सकते थे। जो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो का नाम दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियों में शामिल हो गया। और ये सोचने की बात है कि हम इसमें कितना सफलता हासिल किए, और भी हम मंगल पर जाएंगे, बुध पर जाएंगे, सूरज पर जाने की जो चेष्टा कर रहे हैं वो भी पूरा होगा। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा। इस क्षेत्र में ज्यादा स्टार्टअप का गुंजाइश बढ़ने की उम्मीद है। देश में नए स्टार्टअप स्थापित हो सकते हैं तथा इसे जुड़े स्टार्टअप को बेहतर फंडिंग मिलने का संभावना बढ़ेगी।
इससे कई देश जुड़ सकते हैं। हम लोग जो कहते हैं कि जय जवान, जय किसान, जय अनुसंधान, जय विज्ञान और जय भारत देश महान, ऐसे स्थिति का नारा का सार्थक सिद्ध हो रहा है। कृषि, एक मिनट ज्यादा नहीं बोलेंगे। कृषि क्षेत्र में अभी तक मिट्टी का जांच नमूने लेकर होते हैं। AIML का इस्तेमाल भी मिट्टी के जांच में अब होने लगा है, लेकिन स्पेस में ताकत बढ़ने के साथ साथ यह काम बहुत आसान, तेज एवं विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। जैसा कि आदरणीय, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते देख कर गर्व होता है, तो स्वाभाविक है कि पूर्व में जब मिशन फेल हुआ था तो देश के वैज्ञानिक को निराशा हुई थी। उस समय प्रधानमंत्री ने उसका साहस बढ़ाने के लिए पूरा दिल में सटाकर उसको सहलाते हुए कहें कि असफल आदमी ही सफल होता है। जो आगे बढ़ता है ठोकर तो लगती है, लेकिन सफलता उसे ही मिलती है। बस हम खत्म करेंगे। एक कविता जो हम कहना चाहती हूँ कि यह क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, यह क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को इसके लिए धन्यवाद, आभार अपने क्षेत्र के लोगों के तरफ से मैं करती हूँ। और दो लाइन मैं बोल रही हूँ। हारे नहीं जब हौसले तो कम हुए कुछ फासले, दूरी नहीं कोई हमें समर्पण चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। साधन सभी जुट जाएंगे, बस संकल्प का धन चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा कविता है, धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर श्री राहुल शेवाले जी। टाइम बैक। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं मुंबई साउथ सेंट्रल मुंबई से आता हूँ और मेरे संसदीय क्षेत्र में बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है और मैं रहने के लिए भी वहाँ पे हूँ। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसी इंस्टीट्यूट मेरे संसदीय क्षेत्र में है और वहाँ के स्टाफ और साइंटिस्ट भी वहाँ पे रहते हैं और वो मुझे वोटिंग भी करते हैं। तो मैं उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मैं खुद को बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, चंद्रयान 3 का अभियान यशस्वी करने के लिए मैं सर्वप्रथम एस सोमनाथ जी, इसरो के चेयरमैन, श्री वीरा मुत्तल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, श्री उन्नीकृष्णन, डायरेक्टर ऑफ VSSC, मोहना कुमार, मिशन डायरेक्टर, एस शंकरन, डायरेक्टर ऑफ URSC और A राजरंजन, लैब चीफ और सभी साइंटिस्ट उनका अभिनंदन करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, चंद्रयान 3 का अभियान यशस्वी करने के बाद इसरो के सामने 7 मिशन प्रोजेक्ट के चैलेंजेस हैं। उसमें पहला प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है, आदित्य L1, इंडियाज नेक्स्ट स्पेस सेंट्रिक मिशन इज नॉट फॉर अ प्लैनेट बट रादर इट्स फॉर द ब्राइटेस्ट स्टार एज अ व्यू फ्रॉम अर्थ। सेकेंड जो प्रोजेक्ट है वो मंगलयान 2। द original Mangalyaan mission was launched on November 5, 2013 and its successor Mangalyaan 2 Mars mission is expected to be launched next year. तीसरा प्रोजेक्ट है गगनयान, इंडियाज फर्स्ट मैन मिशन और चौथा प्रोजेक्ट है निसार सैटेलाइट। इसरो हैज अ स्पेस मिशन इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड द स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा के साथ उसका है। पांचवा प्रोजेक्ट है स्पैडेक्स। ISRO will also launch an experimental mission called SPADEX. छठवा प्रोजेक्ट है शुक्रायन। Apart from the moon, Mars and the sun, ISRO will also be launching a mission to study Venus. और सातवां प्रोजेक्ट है आफ्टर चंद्रयान 3, India's next moon mission will be LUPEX exploration mission. तो मैं चंद्रयान अभियान यशस्वी करने के बाद ये 7 प्रोजेक्ट जो चैलेंजेस है इसरो के लिए, उसके लिए भी मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ पे पॉलिटिकल भाषण न करते हुए यहाँ पे टेक्निकल चीजें रखना चाहता हूँ। इसरो के जो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। द मोस्ट नोटेबल ऑफ दिस हैव बीन द चंद्रयान एंड द मंगलयान मिशन विथ अ मैन स्पेस मिशन गंगायान प्लान फॉर इट्स फर्स्ट स्टेज फ्लाइट नेक्स्ट ईयर उसका ईयर। These missions are not just for a technology demonstration, but also for expanding the frontiers of knowledge in space science.
None of this would have been possible without mastering the launch vehicle technology, beginning with the satellite launch vehicle SLV and the augmented satellite launch vehicle ASLV. ISRO has developed and refined the polar satellite launch vehicle PSLV as its workhorse for placing satellites in low Earth and Sun synchronous orbits. The geosynchronous satellite launch vehicle, यानी कि GSLV program, is still developing with its MK3 variant, having undertaken 3 missions and is capable of carrying a 3 metric ton payload into geostationary orbit. Today, the value of the global space industry is estimated to be $350 billion and is likely to be exceed $550 million till 2025. Despite ISRO impressive capabilities, India's share is estimated at $7 billion, just 2% of the global market, covering broadband and direct-to-home television, accounting for 2/3 of the share, satellite imagery and the navigation. Already over 1/3 of transponders used for Indian service are leased for foreign satellites, and this proportion will rise as the demand grows. So ये भी एक challenge है. Developments in artificial intelligence and big data analytics has led to the emergence of a new space. New space entrepreneurship has emerged in India with many startups which seeks value in exploring end-to-end service in the business-to-business and business-to-consumer segment using new space. However, these startups have yet to take off in the absence of regulatory clarity. अध्यक्ष महोदय, न्यू स्पेस के बारे में बताऊं. The term new space is used to refer to a global sector of a new aerospace companies and ventures working independently of a government to develop faster, better and cheaper access to space and specified technologies driven by commercial ends as a distinct from a political or socio-economical oriented ends. New space ventures may include space tourism, asteroid mining, satellite service, etc. SpaceX, Blue Origin are some last year. Are some examples of companies involved in a new space. Another revolution underway is the small satellite revolution. Globally, 17,000 small satellites are expected to be launched between now and in 2030. ISRO is developing a small satellite launch vehicle SSLV, expected to be ready in the 2019. It is the prime candidate along with the proven PSLV to be farmed to the private sector. In the context, the assembly, integration and testing AIT role, which is restricted to ISRO, must now be outsourced. Also, years ago, ISRO launched the idea of a village research, last point, research centers to work in a collaboration with the local panchayat and NGOs, but only 560 pilots have begun. Yes. The last. Expanding this for rural areas is a formidable challenges, but has the potential to transform rural area if properly convinced as a part of the India Stack and the Jan Dhan Yojana. India Stack refers to the ambitious projects of creating an unfilled software platform to bring India's population into the digital age. Last India Stack is a set of API that allows government, business, startups and the developers to utilize the unique digital infrastructure to solve India's hard problems towards the presence-less, paperless and cashless service delivery. Aadhaar forms to core of India. Yes. Last में सिर्फ एक सजेशन दे रहा हूँ, सजेशन लास्ट. अध्यक्ष महोदय, इसरो ने इसके पहले 2023 की इंडियन स्पेस पॉलिसी रिलीज की है. उसमें मेरे 2 सजेशन है, वो आपको बताना चाहता हूं मैं. और उसमें जो गैप्स है और सजेशन क्या है बताना चाहता हूं. गैप्स है, द पॉलिसी सेट्स आउट एन एम्बिशियस रोल फॉर इन स्पेस but provides no time frame for the necessary steps ahead. Neither is there an indicative timeline for ISRO transitioning out of its current practice, nor is there a schedule for in-space to create the regulatory framework. The policy framework, the policy framework... How many times you are saying last? In-space is a regulatory body but doesn't have a legislative authority. तो उसमें सजेशन है कि द स्पेस पॉलिसी 2000 डॉक्यूमेंट्स. तो ये 2-3 सजेशन है वो आपके. अनिल फिरोजिया, थैंक यू. महोदय, मैं आज आपको हृदय से धन्यवाद दूंगा क्योंकि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान करा. आज मैं इस विषय में सदन में अपने विचारों को साझा करके गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं.
कि 23 अगस्त की शाम को 6:04 के उस गोल्डन टाइम की बात कर रहा हूं जब हमारे देश के वैज्ञानिकों ने चांद के माथे पर अशोक स्तंभ की छाप छोड़कर दुनिया को ये विश्वास दिलाया कि चांद पर सफल लैंडिंग करने व रोवर को वहां पर चलाने की काबिलियत अगर किसी के पास है तो वह है भारत। मिशन चंद्रयान 3 सिर्फ स्पेस साइंस में भारत का दबदबे एवं रुतबे को नहीं दिखाता, संपूर्ण विश्व को संदेश भी देता है कि भारत के वेदों में वर्णित ज्ञान विज्ञान का खजाना आज भी भारत के पास है। इस मिशन को हमने अपनी काबिलियत से प्रदर्शित किया है। हमारे इस मिशन से दुनिया को भरोसा भी है कि भारत के विज्ञान पर, भारत की तकनीक पर दुनिया का ये भरोसा हमारी तकनीक पर इसलिए भी खड़ा है क्योंकि हमने चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा लहराया जहां जाने का विचार अब तक दुनिया के किसी भी देश ने नहीं किया। महोदय, चांद के इस दक्षिणी ध्रुव चंद्रयान 3 को इसलिए